Hello and welcome back to Grey Beyond Narratives. Today we're going to talk about three important religious sites: the Hagia Sophia in Istanbul, Turkey, the Babri Mosque in Ayodhya, India, and Al Aqsa Mosque in Jerusalem. These places have a lot of history. They've seen different cultures and religions over the years. We'll look at their stories and see how they've changed over time. We'll also look into what Islam says about praying, converting, and capturing another places of worship, and how these rules have been used in history. This is going to be a great discussion. We want you to join in, ask questions, and share your thoughts, whether you love history, are interested in religion, or just want to learn something new. Then this discussion is for you. We have our speakers with us. I am the host. We have Furkan, Shaji, Sid Siddiqui, and Andolan. Shaji, please take over. Thank you very much. So we're going to look at this in two, three different perspectives. The first perspective is going to be in terms of who these places belong to, how these people basically came into existence in their current form, these complexes, and uh, what are the religious views in regards to that, and how we can basically resolve these issues if that is possible. So I'm going to go firstly to Andolanji. The reason behind that is he can begin with Babri Mosque in terms of what the Hindu perspective in regards to that is, and what the current situation is, and then we can open up the other parts. And if he wants to speak about Al Aqsa or speak in generic way about Hagia Sophia as well, he is most welcome to. So, Andolanji, go ahead. The stage is yours. Would it be possible for me to go next? I'm just doing something, so No, that's no worries in regards to that. So I'll move to Sid Siddiqui to open the panel. Sid, go ahead. Assalamu alaikum. So, in regards to the topic, I'm going to have to say कि ये जो सी तीन जगह हैं हम इनको कह रहे हैं controversial grounds. These places have become controversial grounds because of different people coming together in a place where these places are. These places hold sentimental values to both parties. अगर हम मस्जिद अल-अक़सा की बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए तो जाए अक़ीदत वो है ही हमारा पहला किबला लेकिन वहाँ पे ईसाइयों का जो सा चर्च ऑफ द होलीज भी उसी इलाके में है और अगर हम यहूदियों की बात करते हैं द थर्ड टेम्पल इज गोइंग टू बी बिल्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द ज्यूज से इन दैट पर्टिकुलर प्लेस हम हाया सोफिया की बात करते हैं तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए it is one of the first churches, but the Christians are not there anymore. The whole control is in the hands of the Turks. बीच में एक ऑड वन आउट आता है बाबरी मॉस्क जो कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बारे में इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ less divine value, let's put it like that in the crudest way, if we are to say it. लेकिन उस जगह पे भी एक जाए अकीदत है मुसलमानों के लिए किस वजह से मुसलमानों के लिए इस वजह से क्योंकि वहाँ पे वो उनकी प्रेजेंस का एक निशान था एक बहुत कदीम निशान हिंदुओं का आर्गुमेंट ये है कि भाई वो राम की जन्मभूमि है दैट एग्जैक्ट प्लेस इनके अंदर ये आउट वन आउट इस तरीके से है जो मैं समझता हूँ कि प्लेसमेंट की जगह की ऑथेंटिसिटी हम किसी रिलीजियस साइट से जब हम आर्गुमेंट लेते हैं वजूहात उसकी जोन सी हैं वो अगर हम फैक्ट्स आर्कियोलॉजिकल के ऊपर जाएंगे देन nobody has any stance. Maybe Hagia Sophia has the strongest stance here. Actually, मस्जिद अल-अक़सा के
हमारी वो जाया कीदत क्यों है? वो जाया कीदत हमारे लिए इस वजह से है क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि वहाँ पे हुजूर की मिराज थी। यहूदी वहाँ पे टेम्पल ऑफ द सोलोमन क्यों बनाना चाहते हैं, वो यहूदी बेहतर जानते हैं। what is their methodology of determining the exact place. I'm not sure if it is the exact place or it is somewhere surrounding that area, but it is somewhere surrounding that area where the third temple is supposed to be built. हाया सोफिया के केस में वन ऑफ द फर्स्ट चर्चेज वाज बिल्ट इन दैट प्लेस। उसी मॉन्यूमेंट को लेके हाया सोफिया बनाया गया था, थियोडोर ने जो बनाया था। इट कुड हैव बीन एनी अदर प्लेस बट देयर वाज अ रीजन व्हाई हाया सोफिया वाज बिल्ट अपॉन द चर्च। जहाँ तक बात आती है बाबरी मस्जिद की, और जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे राम मंदिर था, फ्रॉम द टेक्स्ट, क्योंकि जब बात ईमान की आती है, जब बात धर्म की आती है, जब बात बिलीफ की आती है, तो आर्ग्यूमेंट आपने अपने वैलिड टेक्स्ट से देना होता है कि हम ये बिलीव करते हैं इस वजह से। वहाँ पे जो डिवाइन एस्पेक्ट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है, दे आर नॉन फिजिकल, दे आर नॉट falsifiable. If they were, they would not be divine, they would not be miraculous. The whole argument of a miracle being a miracle is it is non-falsifiable after it is done. वगरना वो मिरेकल नहीं होता, वो इट इज जस्ट फिजिकल फिनोमेना। हिंदुओं की टेक्स्ट के अंदर हमें सिर्फ इतना पता है, जहाँ तक मुझे पता चला है अपने हिंदू दोस्तों से और हिंदू भाइयों से बातचीत करके, देयर इज नो डाउट राम was born in Ayodhya. Was that exact place the birthplace of Ram? There is no textual evidence even in Hinduism about that. So उसके अंदर फिर जो सी सेंटिमेंटल वैल्यू फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो वीकन हो जाती है। मुसलमानों की सेंटिमेंटल वैल्यू वहाँ पे इस वजह से थी, इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग। पाकिस्तान में भी कई मस्जिदें ढाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। इट्स नॉट अबाउट द ब्रिक्स, इट्स नॉट अबाउट द मार्बल। पीपल, आई वुड नॉट पर्टिकुलरली केयर कि वहाँ पे कोई नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। इट वॉज अबाउट द सेंटिमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन दैट रीजन। उसको तोड़ा गया है, उसको वहाँ के मुसलमानों के साथ बातचीत करके, आर्गुमेंट करके कि भाई ये तो हमारी श्री राम की जन्मभूमि थी, तो आप लोग हमसे मुआहिदा कर लें, कोई डीलिंग कर लें। हाया सोफिया वाज ट्रीटेड बेटर देन दैट भाई। वहाँ पे क्रिश्चियंस जा भी नहीं सकते, एंड इट्स इवन वन ऑफ द, बेसिकली हाया सोफिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए ऐसा है जैसा हमारे लिए खाना काबा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। Hagia Sophia was not torn down. Hagia Sophia was converted from a church to a mosque and then back and forth, but it was not humiliated. It was not destroyed. What happened in Babri Masjid was a people of a country humiliating a very significant portion of the populace, showing them that you are not a part of us. That is what the problem is with Babri Masjid. It's not divine. It's sentimental because you meant to hurt us. That's my initial point, Shaji. Andolanji, in terms of Babri Mosque, do you have a similar opinion to Sid Siddiqui? Is there any proof, or what do the Hindu texts basically state about the Babri Mosque in particular, or that So, area? so the site of Ayodhya Ram Temple, right? I think the temple inauguration is on 26th January 2024. It is almost complete. So this is not just one disputed site in India.
there are close to the claims are for close to 30,000 sites. There are three important ones. One is the site Ayodhya Ram Mandir. The second one is Mathura Krishna Janmabhoomi, and the third one is the Somnath Temple in Varanasi, where Gyanvapi Masjid is currently located. And in Mathura Janmabhoomi, there is Eidgah and a mosque is located on that particular precise location. uh, in terms of all these three areas, and then there are close to 30,000 more sites which are claimed to be temple. So if you guys just Google, Somnath temple, right, and Google the photographs of Somnath temple back wall, right, you would not need a detailed excavation report to, uh, you know, find out what exactly it is, right? But still, that legal case is going on, right, from the last 70 years. When it comes to Ayodhya Ram Temple, whether that was the exact location, the entire court case is there. The report of excavation is there, which clearly establishes that there was a Hindu temple right at the place where Babri Masjid was situated. So once you dig deeper inside Babri Masjid, there is a substructure and a substructure, right? So there are three layers, ranging, so there was temple, and then, the temple was renovated, and then the temple was finally either broken or broke down, and then Babri Masjid was created on top of it. Plus, there is textual references which are given by, the experts in the court, including the current Peethadish of Tulsi Mutt, who's the gentleman is blind, but he knows all the Shastras. So he quoted from his memory, including giving references from the books with respect to exact location of the temple, right? Which is, so and so distance from the river, so and so distance from this particular site, so and so distance from this particular site. All those references were given, basis which Supreme Court reached conclusion that there was a temple beneath it. That was the archaeological evidence, and then the text evidence was given by various scholars from the various religious texts. So which clearly confirms that this was a Ram temple before it. Now, so I just want you to guys to do Google, right? Do Kashi Vishwanath Temple and Gyanvapi Mosque. Just look at the structure. Zoom in. You would not need an excavation report to point out what exactly it is, So, right? Andolan, how did a mosque come into existence in that particular location So, from your perspective? so one is this archaeological evidences. One is the textual references. There is also lived experience across multiple generations. So, are you aware there is a Kshatriya village next to Ayodhya which has not been wearing pagadi from the last 600 years? Nobody in that village wears a pag, right? There is another village in the location which is not wearing any footwear from the last 600 years because their parents, grandparents, and super grandparents took a vow that we would not cover our heads and feet till the time Ram Mandir is erected back on its place. No, So, no, that's Nandul, fine. But how did the mosque come into existence in that place in the first place? Like, what was the back end story according to your opinion? so coming to this. So, Babar's key, aide.
in the war, his commander, right? When he sacked the city of Ayodhya, he created, and there's an inscription of Babar itself that he, dismantled a temple and erected a mosque over it. And he named the mosque as Babri Mosque. Not that Babri is not the name of Babar, right? Babri is the name of first cousin of Babar, who was boyfriend of Babar, whose name was Babri. So it is Babar's gay lover, Babri, whose name this masjid has been erected upon. Okay, This, thank you very much, Andolanji. this, this, so this comes from Mm, Babar's autobiography itself. mm, mm. That's fine. We can like get into that, but I just wanted to know that at this point, I would like to bring Naimaji into the conversation and see what the Muslim perspective in terms of that is historically and this entire claim and what significance does Babri Mosque have for the Indian Muslims as he happens to be from that part of the world, and I'm sure she has a perspective which is different from yours, Naimaji. Thanks, Shaji. But I'm sorry, I didn't listen to Andolanji. What he has said, he was giving some accounts of this archaeological survey of India, what it has found, and the other institutions which were working, and the court has asked them to produce the evidences and all that. But I didn't listen the whole story about what you are talking particularly. I mean, are you talking about only Babri Mosque, or is the mosques in the India which are getting converted into temples, So the sort of a question thing? which I posed to Andolanji was that if, for example, this is a place which was considered to be Ram's place of birth, then how comes इस जगह के ऊपर एक मस्जिद बनी और ये शुरू से ही controversial था या बाद से था, so he gave an opinion in regards to that कि बाबर के accounts के अंदर लिखा हुआ है कि कोई बाबरी नाम का उसका कोई कसन था जिसके नाम पे उसने ये रखी, who was apparently quoting to Andolan ji, his boyfriend, which is besides the point. But main point ये है कि वहाँ मस्जिद बन गई, वो मस्जिद बनी क्या वो ओरिजिनली सेक्रेड जगह थी हिंदुओं की, that was the main question, या ये बाद में क्लेम स्टार्ट हुए? I mean, Babri Masjid ke bare mein we have spoken so many times about this. Ki what happened when under Congress regime, that this Ram Lalla was put there. Another the a statue of Lord Rama was put there in the middle of the night. Nobody knew at that time, and that the court came into the process. After that, what happened? This story was going on for the last, I think it was early 40s, जब से ये story चल रही थी बाबरी मस्जिद के बारे में, and particularly by this right wing group. लेकिन फिर जो कोर्ट का प्रोसेस भी चल रहा था, और फिर आपने 92 का जो 6 दिसंबर देखा, आई हैव बीन अ विटनेस बिकॉज मैं कॉलेज से निकली थी, मेरा यूपीएससी का एग्जाम था, आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम, और जो मैंने वहाँ पे पहाड़गंज प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब उस दिन it was a miraculous escape for me. Otherwise, I would have been killed at that time. The way I saw people coming with those trishuls and all that. तो उस दिन जो हुआ था और जिस तरह से किया गया था, because अगर ये वाकई, I mean, there are evidence that it was built on a temple and it has been the birthplace of Lord Rama, I don't have any objection. But the way the mosque was demolished and the way the euphoria was created at that time, और जिस तरह से उसके बाद से फिर जो राइट्स हुए एंड द ब्लडशेड हुआ वो सारा, तो वो तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी. और अगर आप ये भी कहेंगे इस वक्त ये 2-3 जैसे मथुरा के बारे में या ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, अगर ये हिंदूज जो है, हिंदुत्व ख़ासतौर से मैं हिंदूज की बात नहीं कर रही, बिकॉज आई नो सारे ऐसे हिंदूज नहीं हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कहाँ मस्जिद है कहाँ मंदिर है.
तो ये तो मसला ही नहीं था, बट इट हैज़ बीन क्रिएटेड रिसेंटली कि आपको पोलराइजेशन करना है, एंड दिस इज़ द पावरफुल वेपन टू यूज़ रिलीजन ऑन दैट. अगर ये हिंदू ये भी कहेंगे इस वक्त, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है इंडिया में ओवरऑल, जो अगर आप देखेंगे द सिचुएशन देयर, वहाँ अगर ये खुद भी कहेंगे कि ये सारी जो मसाजिद हैं ये सारी टेम्पल्स पे बनाई गई हैं, इनको वापस करना है, यू जस्ट टेल मी कौन ऑब्जेक्ट करेगा इस वक्त? क्या मुसलमान इतने एम्पावर्ड हैं वहाँ पे कि वो ये कह दें कि भाई हमारी मसाजिद जो है, हमारी मस्जिदें जो है, इनको चेंज किया जा रहा है, इनको हमसे लिया जा रहा है? क्योंकि जो कल्चर, जो कैंसल कल्चर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसमें आपने एक कम्युनिटी का हर एक चीज, एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, यू हैव मेड दैट ऑब्जेक्शनेबल. तो अब आप क्यों क्वेश्चन करेंगे कि बाबरी मस्जिद थी, राम टेम्पल नहीं थी? ये फिर कोर्ट ने भी मेरे ख्याल में उस वक्त फिर जो डिसीजन दिया वो भी क्या करते, क्योंकि एक वेव है जो थी इसके हक में कि जो हिंदुत्व वेव है, और जिस तरह से किया जा रहा है, जो एक माहौल, एक एनवायरनमेंट आपका जो बन रहा है, तो मुझे अब ये सारी चीजें, बल्कि खुद मुस्लिम्स जो है जो इस पे बात करें, वो कह रही हैं कि भाई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब, क्योंकि एक जो परसेप्शंस जो क्रिएट किए गए हैं, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ रीराइटिंग हिस्ट्री एक क्रिएट किया गया है कि आपको नई हिस्ट्री लिखनी है, कि 800 इयर्स ऑफ मुस्लिम रूल जो है उसको माइनस करना है, उसको इतना डिमोनाइज करना है कि आप उसकी बात ही नहीं करेंगे. तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मैं अब ये प्रूव करूं कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी या राम मंदिर था, क्योंकि अगर आप ये सिर्फ मंदिरों का मसला ही होता तो ओके फाइन, भाई सारे इंडिया को आप, मैंने कहा भी था एक डिस्कशन में अभी रिसेंटली, पूरे इंडिया को आप एक मंदिर बना लीजिए, इफ यू रियली वांट टू गेट हैप्पी विद दैट, गो एंड डू इट. लेकिन अगर आपका पोशाक, यानी आपका ड्रेस, आपका खाना, आप के सोशल जो कस्टम्स है, मैरिज वगैरह, लव जहाद, ये सारी चीजें अगर आप इस सारे को देखेंगे वहां पे, तो फिर आप क्यों मंदिर की ही बात करें? ये पूरा कैंसल कल्चर है, एक प्रोजेक्ट जिसकी जो बेस बनी है और जिसको आगे एक्सपैंड किया जा रहा है. तो आज अगर आप कहेंगे कि भाई प्रूव करेंगे कि वहां पे राम मंदिर नहीं था, वही मस्जिद ही थी, लेकिन इस तरह, आई मीन, इसका कोई तुक ही नहीं है अब, कोई इससे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी. और ये जो वापी मस्जिद का भी है, वहां पे मुसलमानों ने नहीं शोर उठाया कि भाई ये फाउंटेन है वहां पे, ये कोई शिवलिंग नहीं है. और अगर आप वहां पे अब 4 हिंदूज को लेंगे, वो कहेंगे नहीं, ये फाउंटेन नहीं है, ये मुसलमानों ने तोड़ के मंदिर किया है. तो हु इज गोइंग टू लिसन टू देम? इसलिए मुझे मुझे अब ये बहस वगैरह अजीब सा लगता है इस मुसलमानों को, जो वो देख रहे हैं, जिस तरह से वो फील कर रहे हैं. उसमें मुझे लग रहा है कि अब आंदोलन जी बताएंगे या कोई और हमें ये बताएं कि, और इसका प्रूफ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट इलेक्शन अभी आ रहा है, बीजेपी, if it's going to be there, and you will see a tremendous change in Indian polity. और आप देखेंगे वहाँ पे ये सारा कुछ जो है चेंज हो रहा है. एंड आई डोंट नो हाउ मुस्लिम्स आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू दीज टॉपिक्स. जब वहाँ पे अब लाइफ जो है कुछ लोगों की, जैसे लिंचिंग वगैरह हो रही थी, जब वो है, लाइफ इज एट स्टेक, और आपको वो सेफ्टी चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद में कहाँ जाएंगे आप? थैंक यू शाह जी. जी नईमा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा. जी जी, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ मैं आंदोलन जी, बट आई वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट नईमा जी सेड. नईमा जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ इस बात पे, क्योंकि हमारी कोई उस बिल्डिंग के साथ एक हिस्टोरिकल अफिलिएशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब वो टूटी गई तो इट डिड नॉट रियली होल्ड दैट मच ऑफ अ प्लेस इन मुस्लिम्स
as a whole. और जो आगे आपने बातें की हैं in terms of other mosques which are going to be destroyed and what people want to do, those things obviously are going to be issue, and I think that's a more concerning real-time issue for Muslims of the subcontinent, because that is what may occur in the future rather than dwelling over the past. और जगह बना दी है तो वहाँ पे obviously I completely understand where you're coming from. इस पे आगे expansion पे बात करेंगे. आंदोलन जी आप बात करें, आप कुछ हाँ, कहना मेरा बस चाहते एक छोटा सा प्रश्न था नईमा जी से. Naima ji, if you were giving UPSC exam in 1992, so I am sure you would be 2025 at that particular point of time, you know. So, were you aware that there was concentrated negotiations between the Hindu groups and the Muslim groups, where Hindu groups requested Muslim groups, and this has been going on for 30, 40 years before 92. They were requesting just grant us these three sites and we will not issue any other 30,000 sites issue. And that was summarily rejected. The proposal was just give these three sites to us. We will move the masjid with all dignity and grace, brick by brick, into a new location. We would put our people, we will put our money, we would make it a much grander mosque. But just these three places. Isn't it true? I just want that to But be, no, I on. don't know anything about that, but I just want to ask you one question. If the Hindus have waited for 3, 4 decades for this, what was wrong to wait for another 3 decades when court has given a decision? They should have waited for the court. Why So, did they go and demolish it? okay. So you were not aware about many of the issues. So, we can take that, your viewpoint was not very informed. I just wanted to understand that you were not aware of this negotiations which were going on from many decades where Hindus virtually requested. I also remember a very prominent Hindu seer falling on the feet of the Muslim ulemas requesting to grant these three places. And he was also summarily rejected. They said, we will not give a single inch. This is in a country, who is being accused of lynching, breaking this thing. आइए हम लोग साथ में मिलकर दुआ पढ़ते हैं नईमा जी. जो हालत पाकिस्तान में है माइनॉरिटीज की, उतनी अच्छी हालत हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज की हो जाए. आइए हम आपके अल्लाह से यही दुआ करते हैं. आइए मिलकर करते हैं. Andolanji, I'm not interested in Pakistan. I know what's happening in Pakistan and I give damn about Pakistan. Which is लेकिन precisely the इंडिया में problem, हम Naima ji. इंडिया Which के is बारे में हम precisely the इसलिए problem, Naima ji. नो 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 नाइमा जी, आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ पे एक जस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नहीं, एक सेकेंड, आपको बात सुन. मैं इसलिए कह रहा था, आज पूरे पैनल के साथ में ओपन चैलेंज, मैं आपके अल्लाह से दुआ करने को तैयार हूं आपके साथ कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी की हालत है, अल्लाह करे वैसे ही हालत माइनॉरिटी की हिंदुस्तान में हो जाए. क्योंकि यहां पे जब भी हिंदुस्तानी मुसलमान आता है ना, और वो रेस करता है आज से 9 साल पहले हुए 3-4 लिंचिंग के केसेस को, आज से 30 साल पहले हुए डिमोलिश हुई एक मॉस्क को, और उसके अंदर इतनी कोफ्त है, तो जो हिंगलाज लेकिन माता आंदोलन जी जो पॉइंट है ना, जिस डायरेक्शन में एक सेकेंड, एक पॉइंट बस कंप्लीट कर लेने दीजिए. 4 दिन पहले हिंगलाज माता मंदिर गिराया गया. जिस समय बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई है, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में 1,500 मंदिर गिराए गए. राइट. ये जो अगर नहीं, नाइमा जी एक सेकेंड, मैं पॉइंट खत्म, आप पूरा जवाब दीजिएगा. मेरा सिंपल पॉइंट इतना है ना नाइमा जी, कि जब आप अपने साथ में रहने वाले और उसी जमात के लोगों को, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को पाकिस्तान में जिस तरह घुटता और तिसलता देख के आप कहती आई डोंट केयर, उसी तरह मैं भी ये कहता हूं कि ये जो फेक नरेटिव है ना कि 2014 में 2 आदमी लिंच हो गए तो पूरा इस्लाम खतरे में पड़ गया हिंदुस्तान में, एक बाबरी मस्जिद टूट गई 500 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में तो मुसलमान खतरे में आ गए. यू हैव टू बी सेंसिबल एंड प्रोपोर्शनल.
नहीं तो हमारे साथ मिलके दुआ करिए कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी की हालत है वैसी हो जाए हिंदुस्तान में, अगर बहुत अच्छी है तो। अब मैं बात करूं? जी जी नईमा जी प्लीज गो अहेड। अब मुझे ये बताइए कि प्लीज आंदोलन जी, पाकिस्तान के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी वहाँ पे वर्क नहीं हुई, इस्लाम उन्होंने देश का नाम रखा वो भी नहीं चला। अब पाकिस्तान से हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए कि इंडिया में डेमोक्रेसी अच्छी भली चल रही है, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो चल रहा है, इंडिया में हम समझते हैं कि एक रूल ऑफ लॉ है जो स्ट्रेंथन किया गया, इंडिया में इंस्टीट्यूशंस बने, इंडिया में जो भी कम्युनिटी थी एट लीस्ट अगर सबको बराबरी के राइट्स नहीं मिल रहे थे बट एट लीस्ट दे वर कंफर्टेबल। और इसीलिए जितने पाकिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा इंडिया में मुसलमान जो है खुश हैं और अपने आप को इंडियन कहने में उन्हें फख्र महसूस होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया है, वो इंडियन जो है मुस्लिम्स का उनका क्या क्यों ऐसा वो इस पे परेशान हो जाएंगे? भाई उस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, चाहे पॉलिटिशियंस के साथ, चाहे माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे अफगानियों के साथ, उससे हमें क्या करना? हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे और जो चल रहा था, जिस तरह से ये मुल्क चल रहा था, और उसके बाद से ये जो एक नरेटिव स्टार्ट किया गया कि मुस्लिम रूल, मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेडर्स, इनकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, वो कर दो, मस्जिदें, ये मंदिर मसाजिद ख़त्म करो। अब ताजमहल पे भी अब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी वो भी खड़ी हो गई। हमें तो दुख उस बात का है कि एक अच्छा खूबसूरत मुल्क जिसमें आपको एक लग रहा था, यू प्राइड फील करते थे कि भाई हमने बहुत एक स्ट्रगल की है और एक ऐसे मुल्क में हमने एक इलेक्टोरल प्रोसेस, अ वेरी सक्सेसफुल इलेक्टोरल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे लोग चल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अचानक आप उठ के आ रहे हैं, भाई चलिए अब आप स्टार्ट करिए मस्जिदें ख़त्म करने की, मुसलमानों को बीफ वो खाते हैं उसको निशाना बनाएं, ड्रेस कोड है उनका उसको बनाएं, लव जहाद है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने एक साथ शुरू की हैं, आप क्या समझेंगे? मैं तो नहीं, मैं तो कभी इंडिया को पाकिस्तान से कभी कंपेयर ही नहीं करूंगी। ये तो ज़मीन, ये तो टू पैरेलल लाइंस है। पाकिस्तान की बात ही ना करें। जब आपको किसी डेमोक्रेसी से इंडिया को कंपेयर करना है, आप तो ब्रिटेन से करिए या यूएस से करिए, आप पाकिस्तान से क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जी जहां मैं एक पॉइंट रेस करना चाह रहा था आंदोलन जी। जो आपने दुआ की है, मैं कहता हूँ कभी भी हालत ना हो ऐसा पाकिस्तानी। आई थिंक जो नईमा जी का पॉइंट है, आई थिंक नहीं करना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था, आंदोलन जी आप उसके बाद पूरा बोलिएगा, थोड़ा सा अलग पूरा हो जाएगा। बोलिएगा। नाइमा जी को एक बात का जवाब देना चाह रहा था मैं, बस एक चीज का, वो नहीं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट बोले उसके बाद आई आल्सो हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। जी जी तो चलिए नाइमा जी, हमने आपकी ये बात मान ली कि पाकिस्तान इज अ वेरी बैड एग्जांपल टू कंपेयर। लेट्स कंपेयर इंडिया विद इंडिया। जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटीज की हालत है वैसी हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज की हो जाए, ऐसी दुआ करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जितने टेंपल तोड़े गए, हम लोग केवल उतने ही मस्जिदें तोड़ेंगे, इसकी दुआ करते हैं। यही आंदोलन मेरा इसी पे sorry last point and then I will keep mum, just a last, I'm so sorry to interrupt. एक पॉइंट आंदोलन जी को मैं कहना चाहूंगी, ये जो आप बता रही थी ना, 2014 से पहले, बीजेपी के आने से पहले बड़ा खुशनुमा माहौल था हिंदुस्तान के अंदर। जी जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, उस खुशनुमा माहौल को ही तो रिपीट करना है ना। जो जम्मू एंड कश्मीर में खुशनुमा माहौल था वो रिपीट होना चाहिए ना, इतना खुशनुमा था वो। मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए भाई आंदोलन जी, जो आप ये कह रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर के माइनॉरिटीज वो हमारे अपने लोग हैं, फिर भी वो कोई गैर नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं, हम ये थोड़ी ना कह रहे कोई गैर है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो हालत वहां माइनॉरिटीज की है वो पूरे इंडिया में होनी चाहिए। अगर आपने कभी उसको क्रिटिसाइज नहीं करा है, अगर नईमा जी आपने 2014 से पहले उसको खुशनुमा हालात माना है,
तो वही खुशनुमा हालात हमारे पूरे मेनलैंड में माइनॉरिटी के होने आंदोलन जी चाहिए। उनका रिस्पॉन्स तो सुन लेना आप, मैंने फिर कहा उसके जो बाद आप आप बोलिए। कह रहे हैं कि वहां पे जो मंदिर तोड़े गए, आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं है। इतना सारा खून खराबा वहां हुआ, लेकिन एक मंदिर भी नहीं, बल्कि मुसलमानों ने वहां मंदिरों को प्रोटेक्ट किया और वहां पे रहे। अगर ये जो आपका ये हिंदुत्व एजेंडा है कि वहां पे क्या हुआ, किसके साथ हुआ, और ये कश्मीर फिल्म वगैरह बनाने से अगर आपको लग रहा है वो सारा सच है, तो आई एम सो सॉरी। क्योंकि मैंने जितना काम कश्मीर पे किया है एंड ऑन बीबीसी, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्रीज निकाल के दे सकती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और ये सारा नरेटिव गलत है कि वहाँ किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि मुसलमानों ने उसको प्रोटेक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। आई विल कीप मम नाउ। No, no, Naimati, you don't need to keep numb at all. This is what this conversation is all about. I think Andolanji is disconnected. We'll wait for him to come back, and then he's back. Uh, his device. Shaji, I had a few questions for Andolan and a few comments that I Yeah, yeah, wanted go. to make. Thank you. अंदोलन जी, पहले जो आपने दुआ मांगी है, मैं कहता हूँ कि like, जब बाबरी का हुआ था, पाकिस्तान में भी certain things happened. Religious places जो हिंदूज की थी उन पे अटैक्स हुए थे. That's wrong. अगर इधर होंगे उधर करेंगे, back and forth, it's a vicious cycle. I think it would never end. Let's put it that way. तो इसकी एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए. दूसरा जो आप दुआ कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की जो हालत है वो इंडिया में हो ना हो, आई गेस द मेन प्रॉब्लम इज कि जिस डायरेक्शन में अभी सिचुएशन जा रही है बहुत सालों से, और अभी भी डायरेक्शन उसी तरफ ही है, मुझे लग रहा है कि शायद हालत वैसी हो जाए माइनॉरिटीज की इन इंडिया जो पाकिस्तान में या और भी जगहों पे है. एंड दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन. इट्स नॉट अबाउट के आप कंपैरिजन ड्रॉ करें, हम उसमें प्रोग्राम कर लेंगे, अलग डिस्कशन कर लेंगे, बट आई थिंक कि जो डायरेक्शन जा रही है वो उसी तरफ है. इट्स नो डिफरेंट. Furqan bhai, can I ask you a question? इससे पहले कि आप आंदोलन जी से करें, पाकिस्तान में क्या हालत है माइनॉरिटीज की? शाह जी, लाइक माइनॉरिटी कैसे कैसे हैं पहले आप अगर क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदी कम्युनिटी को भी डाल लें तो हालात कुछ अच्छे नहीं है. नहीं, Based हालात on कुछ अच्छे नहीं है, but in if you were to draw a comparison, in that comparison I understand there are a few idiots जो कहते हैं कि नए मंदिर नहीं बनेंगे और चीजें नहीं होंगी, but as a whole, ठीक है, I think you grew up in Pakistan. I've been in part and parcel of the Pakistani society myself as well. There might be issues, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती लोगों से अल्लाह अकबर किसी क्रिश्चियन से करवा रहे हैं, या इस तरह का कुछ नहीं है कि एट लीस्ट आई हैवंट सीन इट. इफ यू हैव और यू हर्ड कि किसी बंदे को जाके ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर किसी एमडी से करवा दिया है. It's और दूसरी बात यह है कि whenever something happens within the minorities of Pakistan, the vast majority of Pakistanis, as well as the news channels, with all the problems Pakistan must have and might have, you don't see कि जिस तरह आंदोलन भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ है, हमारे पाकिस्तानी लोग मेजॉरिटी के अंदर ये बात नहीं आके करते कि हम ये कर देंगे, बड़ा अच्छा हो गया, क्रिश्चियंस का बॉम्ब फट गया या मंदिर नहीं बनने दिया, तो इस वजह से मेजॉरिटी मुसलमान जो हैं या पाकिस्तानी जो हैं वो ये चीज़ें नहीं करने शुरू कर देते. ठीक है, इट्स हार्डली दैट यू एवर कम अक्रॉस अ पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन और समबडी लिविंग इन पाकिस्तान जो आके ये बात कहे कि बड़ा अच्छा हुआ मंदिर नहीं बनने दिया, बड़ा अच्छा हुआ कि क्रिश्चियंस का को किसी ने फेंटा लगा दिया. ये इस तरह की बातें तो नहीं एग्जिस्ट करती. सो दैट इन इटसेल्फ हैज टू बी टेकन एज अ नेशनल नोशन. सो जब हम Can I जी, आंदोलन जी एक सेकंड पहले, लाइक लेट मी मैं रिस्पॉन्ड. ये कहता हूँ, मैं यहाँ तक ये कहना चाहूंगा आंदोलन जी, मैं भी आपसे दुआ करता हूँ कि आप पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी की तरह
इतने टॉलरेंट, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे इतना टॉलरेंट होने की कि आप गलत को गलत बोल सकें एज अ आम सिटीजन, एज अ जी नॉर्मल सिटीजन। और जी आपके जी लोगों की जो तादाद है, जब हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है, आई फील बैड अबाउट दैट। अगर किसी बंदे का ना हक कत्ल हो रहा है, आई डोंट फील गुड अबाउट दैट, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो अमादी है, या वो मैं क्रिश्चियन है, मैं यहाँ पे या एक वो पॉइंट कोई भी है। आप समझ रहे हैं? आई वुड नॉट मैं से यहाँ पे एक कि इतने मुसलमानों को आपने मार दिया मुझे एक एक करके जहाँ पे व्यू पॉइंट पे जस्ट जवाब दे लेने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे शादी आप कर क्या रहे हो। मैंने इसीलिए एक एक करके जब इरेज करा जाता है लाइफ, जैसे अभी नाइमा जी ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में तो मंदिरों को प्रोटेक्ट करा गया, मैंने चैट पे लिस्ट डाली, and that is only between the 10 years of 1986 to 1996. More than 40 temples were vandalized, burned, arsoned, broken within Indian Jammu and Kashmir. Chat पे लिस्ट पड़ी है, ओके, थैंक यू आंदोलन with जी। name, with name, with the date, with the place. No, no, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. So, Shajay, we don't want to be like Pakistan's majority, to exclusively hold all positions only for Sunni Muslims. In India, we have minority president, we have had minority prime ministers. We don't want to be like you. So I agree with Naima ji, we would not compare ourselves with Pakistan. But when you say in Pakistan, when हम किसी से जय श्री राम नहीं बुलवाते जबरदस्ती, आप लोगों के यहाँ every day 3 minority girls, every day, Hindu, Sikh and Christian are abducted, raped till they agree to convert, then married off against their wishes, and after married 6 months later they are divorced and sold in Hira Mandi. What are you talking about? and whenever such मैं a यहाँ And पे this case is occurs, सची the सच happening other from last 30-40 years. आंदोलन जी, जो पॉइंट शाह जी का था, एंड आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग के हालात ठीक नहीं है, सही है, आई एग्री टू दैट पॉइंट। बट जो शाह जी का That's right, पॉइंट था, द beautiful बात रिएक्शन फ्रॉम द इफ आई कैन जस्ट फ्रेज वन पॉइंट, द रिएक्शन दैट कम्स फ्रॉम द मेजोरिटी, देयर इज द डिफरेंस। ठीक है, वी डोंट एग्री विद व्हाट इज हैपनिंग, we disagree, we condone the acts that happen, and from you don't there comes No, justifications so, कि ये इसलिए no, इसलिए so, as an action and a reaction. I'll go to so Maham and then Andolan ji, I'll come just, to you. just, I'll come अच्छा to you. just मैं a एक second, सेकंड just a Let's अदुल्ला जी second on this. गिव मी अ she मोमेंट has Just been a waiting second. for Just a she second. has Just a she has second. been, you can Brother, respond later Andolan ji पूरा अदुल्ला जी coherently आपकी एक जी साथ ही Maham पे please. मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ मुझे कोई जवाब सच नहीं चाहिए ठीक है पाकिस्तान में जो आप कह रही हैं ना कि ऐसी एक्सक्लूसिवली कोई सारे भी सीट इंफॉर्मेशन ला दीजिए जिसका जवाब आपको नहीं चाहिए, और नहीं तो जवाब देने का समय दीजिएगा। अच्छा ठीक है लेकिन एनीवे पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के जो है वो एक्सक्लूसिव वो नहीं था उनके अपने सीट्स होते हैं लाइक आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ क्रिश्चियन और उसके फादर जो है ही इज वन ऑफ द वो केपी मैग्नेट वो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं ठीक है दूसरी बात ये इस तरह सारे सूबों में माइनॉरिटीज के अपने इश्यूज डील करने के लिए उनके अपने मिनिस्टर्स हैं लेकिन सेकेंडली मैं ये बात कहूंगी कि it's not just the difference that कि अमीर के हिंदू है या मुस्लिम है द डिफरेंस इज ऑल्सो अबाउट कौन अमीर है कौन गरीब है सिंध में एक अमीर हिंदू को कोई कुछ नहीं कह सकता कोई भी कुछ नहीं कह सकता लेकिन एक गरीब हिंदू को वो तो फिर मैं क्या बताऊं आपको फिर तो वो जो किसी भी केस को उठा के छोटी बच्ची के साथ ज्यादती को उठा के उसको वो किया जा सकता है आई डोंट थिंक एट दैट पॉइंट दोस एनिमल्स I would call them animal, not human. Think about they're practically worried about their वो religion because ऐसा तो नहीं है ना कि खाली हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है मुसलमान औरतें बड़ी सेफ हैं ठीक है एंड इट्स अ प्रॉब्लम इट्स सबकॉन्टिनेंट ओवरऑल ना कि मुसलमान लड़कियों के साथ भी तो मतलब वो भी तो सच वो नहीं है ना ठीक है तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वेरी द काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी कैन से कि अच्छा एक
इतनी लड़कियों के साथ उसको जो उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, ठीक है, तो उनको या कोई कंडोन करता है या कोई कहता है कि ये बड़ी अच्छी चीज है। इवन अगर कोई करता भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही वो टाइप का आदमी है, ठीक है, वो करता है इसको कंडोन कि हाँ सही हुआ, ठीक है, ही वुडंट हैव द गट्स टू से इट आउट इन पब्लिक, बिकॉज जाहिर से जाहिल आदमी भी इस चीज को कंडेम करता है कि नहीं ये चीज तो बहुत गलत है, किसी को जबरदस्ती वो करना, कन्वर्ट करना, लेकिन होता है वो, दैट इज सोसाइटल वाइज, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब वी ट्राई आवर बेस्ट बट सच को चेंज नहीं कर सकता। जी, अब मैं आपका और दोनों का जवाब एक ही है। ये इसको बोलते हैं जुबानी जमा खर्च। जहां 30 साल से 3 लड़कियां रोज कन्वर्ट हो रही हो जबरदस्ती रेप करके, और आज भी वो कॉन्टिन्यूड हो, उसको कहते हैं मेजॉरिटी का सपोर्ट होना। यहां 2007 में 7 इंसिडेंट हुए थे काउ लिंचिंग के, उसके बाद से कभी रिपीट नहीं हुए। इसको कहते हैं मेजॉरिटी के सपोर्ट से इस तरीके के इशू सॉर्ट आउट करना। आप फर्क समझ रहे हैं जुबानी जमा खर्च और एक्शन में? तो ये बड़ा क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है विल ऑफ द मेजॉरिटी। आप उस चीज को खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 3 लड़कियां रोज जोड़ तो रही हैं इस्लाम से। हमारे यहां काउ लिंचिंग खत्म हो चुकी है और आपको कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता, आप काउ लिंचिंग करते रहते हैं। जब ये 2014 में लिंचिंग हुई थी, उससे पहले 2009 से 2014 में काउ स्मगलर्स ने 60 लोगों को मारा हुआ है, इंक्लूडिंग 22 पुलिसमैन। There is a complete racket of cow smuggling within UP, MP, all the northern belt up to West Bengal, where they, pick up cows and other cattle from various, farmers and then sell it in Bangladesh. This is a pura nexus. Most of the people who were, killed in cow lynching or thrashed, all had been proven to be cow smugglers. While I am not in favor of vigilante justice, they should have been handed over to police for action. But traditionally, these people, if not checked, they have killed people, they have even killed policemen. ठीक है, thank you आंदोलन जी। आंदोलन जी, let's get back to the topic and I had a few questions। मैंने कोई 10 मिनट पहले भी कहा था। आपने केस का बताया बाबरी का, we were discussing बाबरी मस्जिद रेवोल्यूशन एंड द केस जो लीगल हुआ। आपने बताया एविडेंस सबमिट हुआ, उस एविडेंस का मुझे बताइए कि कोर्ट ने उस पे क्या जजमेंट पास की, और उस एविडेंस जो सारा आपने आउटलाइन किया 1 2 3 4, उसको कोर्ट ने किस तरह फ्रेज किया था फाइनल जजमेंट में? डिड दे एक्सेप्टेड? एक सेकेंड, क्वेश्चन सुन ले आंदोलन जी, रिलैक्स करें। मतलब क्वेश्चन बड़ा कैटेगोरिकल है। उस एविडेंस को कोर्ट ने किस तरह लिया था जो आपने सारा बताया? उसे उन्होंने कहा कि इस एविडेंस की बेस पे हमारी जजमेंट आ रही है, एविडेंस वेग है, हमें नहीं समझ आ रही, या उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता? उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज की थी उस एविडेंस की जो आपने पूरा कैटेगराइज करके अभी बताया? और उन्होंने जो स्ट्रक्चर पहले था उसको क्या कहा था कि वो क्या है और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? उसमें क्या कहा था आपकी कोर्ट की जजमेंट ने जो 2019 की है? हाँ, अब आपको मैं डिटेल इसका बताता हूँ एस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, जो भी 12, 2400, 2800 जितने भी पेज का ये डॉक्यूमेंट है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इसमें मल्टीपल एविडेंसेस सबमिट हुए थे। तो सबसे प्राइमरी जो एविडेंस था वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे, राइट? आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, और फिर ये दोबारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया गया, एक बार नहीं 2 बार कराया गया। उसमें क्लियरली स्टैब्लिश हुआ कि देयर वाज अ हिंदू मॉन्यूमेंट which was there at this site। क्योंकि खंबे मिले, जो भी स्ट्रक्चर बाबरी का बना हुआ था। आंदोलन जी, आई वुड इंटरजेक्ट एंड से पॉसिबली का वर्ड यूज हुआ है फाइनल जजमेंट में। पॉसिबली मैंने पढ़ा है, इट वाज पॉसिबली का वर्ड यूज किया है उन्होंने। पॉसिबली जहां यूज हुआ वहां पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है?
जहां पे पॉसिबली यूज हुआ मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, कल झूठा साबित होऊंगा। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में अनडिनाइबली हिंदू स्ट्रक्चर है, कोई पॉसिबली नहीं, अनडिनाइबली। मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भैया बात कर रहा हूं मैं, कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उस पे उसके साथ पूरी डिटेल्स भी लगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की फाइंडिंग्स भी लगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है वो भी लगा है, ठीक है। तो क्लियरली हिंदू स्ट्रक्चर था। हिंदू स्ट्रक्चर प्रीडेट्स द बाबरी टेम्पल, बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर by multiple years, and there were multiple levels of temples found. So that not only there was temple there, this temple dated all the way back to first century AD, उस तक के अवशेष मिले, राइट। सेकेंडली, जो पॉसिबली शब्द का यूज हुआ है, पॉसिबली शब्द का यूज केवल एक जगह पे हुआ है कि ये तोड़ के मस्जिद बनी थी या ऑलरेडी टेम्पल डिप्लीट हो चुका था उसके ऊपर मस्जिद बनी। यहां पे पॉसिबली शब्द का यूज हुआ है, इसका डिटर्मिनेशन सही से नहीं हो पाया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी या मंदिर ऑलरेडी डिप्लीटेड स्टेटस में था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई। इस पे पॉसिबली यूज हुआ है। आंदोलन जी, जो मैंने जो पढ़ी थी उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने जो नहीं वो मैं जो एक सिंपल चीज कह रहा हूं, एविडेंस जमा होता है एंड देन देयर इज इंटरप्रिटेशन, और उसकी अप्रेजल होता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और वो अपना एक जजमेंट देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको आप देखते हैं, एविडेंस तो बहुत से सबमिट हो सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो उन्होंने इस स्ट्रक्चर पे दिया है वो क्या है, मुझे वो अगर आप लाइंस पढ़ के बता दें या आप मुझे बता दें वो क्या है। मैं आपको जजमेंट की ही समरी बता रहा हूं। आंदोलन जी, वी कांट हियर यू। I think Andolanji is disconnected, so we'll move to East. East, would you like to pick up from here? And like, what are your initial thoughts on the actual conversation, so we can proceed from there? I think you've been here for a bit. जी जी, पर फुरकान भाई आप मैंने भी खोल रखी है, आप पॉसिबली वाला अगर पैराग्राफ पढ़ दे सबके लिए तो इट वुड बी ग्रेट। आई कैन ऑल्सो, मतलब ये एक मेरा काउंटर एक क्वेश्चन था, बट आप इसके बाद कर दीजिएगा। बट न्योमा जी ने काफी अच्छे कंसर्न उठाए कि दिस विल क्रिएट पोलराइजेशन, हेट, बट जो आइडियल स्टेट का जो हमारा ड्रीम है, इट इज नॉट पॉसिबल इफ सर्टेन रैशनल पीपल ऑपरेट इन बैड फेथ। हाउ डू पीपल ऑपरेट इन बैड फेथ? व्हेन जब इनजस्टिस अगर हुआ है उस चीज को, इफ मुझे आवाज यू आर नॉट, कोई बोल रहा था क्या कुछ? हाँ जी आंदोलन जी, इफ आई मैं लेट मी मैं कह रहा हूँ कुछ, इफ आई मे जी। So, जो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग फॉर इट, और इंस्टेड ऑफ giving the justice to the community, if you provide a cover, if you operate in bad faith, तो I also fear that जो न्योमा जी का जो कंसर्न है कि इस देश में पोलराइजेशन होगा अगर if people continue to operate in bad faith, तो हाँ, yes, it will happen. So, and Sid also asked the question ki what are the proof that this was there? So Andolan ji he answered this question from top to bottom approach, but if we can take the bottom to top approach also, so we also see that in the scriptures it is a prevalent practice. There is a sunnat of prophet that he also broke the 360 idols. So it is a prevalent practice of Muslims wherever they grow. That's why the claim of Hindus of 35,000 temple is there. So if people, again I would repeat this statement, if people continue to operate in bad faith, if they continue to provide a cover to those who have done the crimes, then I believe, yes, we are heading over to the bad state. But people should not be afraid. The Hindu community waited for 350 years to get this justice.
We will not adopt the justice model of China or justice model of China. Rest assured. जी. जी, और उसके बावजूद भी देखिए ये जो 3 टेम्पल्स हैं, राइट, दीज आर वन ऑफ द होलीएस्ट टेम्पल्स, राइट, द राम मंदिर, द कृष्ण जन्मभूमि. You know currently where prayers happen in Krishna Janmabhoomi? So Krishna ji was born in a prison, right? The prison normally used to be at a basement of the killa or the palace, right? The exact location, currently I'm talking about, the exact location of the Krishna Janmabhoomi where prayer happens is right beneath the Eidgah Masjid. Right now. So when I go to pray at Krishna Janmabhoomi, there is a mosque above the surface. The temple is in the prison cell, which is beneath the surface. And I've told you to just Google the images of Somnath temple. Look at the walls. You would not need any, archaeological survey to reach a conclusion. And despite of the visual confirmation, imagine the patience of 80% population Hindu. They are going through the legal route. I can't hear anyone. Is anyone speaking? No, Shah, I don't think so. Anyone is speaking. I thought you I had was questions. Are your questions Yeah, over? yeah. Like I would again say कि like the judgment उसके अंदर like clearly मैंने तो कहीं मुझे बता दें कि establish हो रहा है कि it was a Hindu structure. Evidence नहीं, जो judgment है उसमें. ठीक है, पेज नंबर दे दें, बाकी दे दें, I'll check it. I don't think so. I found it the last time I went through it. B, like the act of demolition, it was illegal. और फिर जो आपका 92 में एक एक्ट आया था कि जो स्ट्रक्चर्स आपके Places of worship. जी, तो उसकी बेस पे फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि दिस समथिंग जो 3 स्ट्रक्चर्स को आप डिमांड कर रहे हैं, इज दैट एक्ट स्टिल इन प्लेस? पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा. That act is still in place. Its constitutionality is being जी. just here. जब ये एक्ट बनाया था, ये एक्ट बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के तुरंत बाद बनाया गया था. पहले बना था 92 में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये? नहीं, ये उसके तुरंत बाद बना है. मेरा ख्याल है 92 में इम्प्लीमेंट हुआ है आंदोलन जी, जो मैंने चेक किया था. सुन तो लो, जब मैं बताता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ आपसे. दीज आर ऑल फैक्ट्स दैट यू कैन गेट बाय सिंपल गूगल, राइट? ठीक है ना? तो ये तुरंत बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के तुरंत बाद ये एक्ट बना था. इसमें अयोध्या की साइट को एक्सक्लूड करा गया था स्पेसिफिकली. ओके, क्योंकि जो अयोध्या का क्योंकि जो अयोध्या का केस है वो 1800 कुछ से चलता आ रहा है, लीगल केस. 1870 or 1880, I don't recall the date exactly. The first claim was made in 1815 or 50 or 60s में हुआ था जी. Since that time, right? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इस समय कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट हो रही है, क्योंकि ये जो है 1947 की एक कट ऑफ डेट लेता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी कैरेक्टर था जिस भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट का वो इंटैक्ट रहेगा. अब इसमें कुछ ट्रिकी भी आ जाती सिचुएशन. तो जैसे ज्ञानवापी का केस है, तो ज्ञानवापी में दो टेम्पल्स हैं. ज्ञानवापी है, गौरी टेम्पल है, राइट? सो वेर एवर देर इज शिवाज टेम्पल, देर इज पार्वती टेम्पल ऑल्सो, राइट? सो द प्रेयर्स नेवर स्टॉप्ड हैपनिंग within the Gyanvapi Masjid premises in the Gauri temple part of it, right? So the prayers happened on 14th of August 1947. The prayers happened on 15th of August 1947. The prayers continued to happen till 1998.
when the state government stopped the prayers from happening, right? So, what would be the character of the place on 15th August 1947 when prayers are happening in a premise? Namaz is also happening, prayers are also happening in the same premises, right? So, the constitutionality of that act is being tested, and the current legal case of both Mathura as well as that of this thing Ganwapi is pending. So currently excavation is on in not excavation, but the ASI, the Archaeological Survey of India, is conducting a survey of the site in Ganwapi to see that what is the religious character of the structure. And as I told you multiple times, Google the image. You need not need expertise in ASI to reach a conclusion, right? Similarly, the Mathura case, the ownership of the land has been with the Birla Trust predating 1947. The Birla Trust subsequently transferred his land rights. So, Birla Trust is a business owner, they have a religious trust. The entire Eidgah land, including the Eidgah mosque land, is held by Birla, and they transferred the rights of the land to Krishna Janmabhoomi Nya, which is another trust, right? Andolanji, can I So, ask you a question once you're done? I have a yeah, yeah. question for you in regards to this. So I understand all these claims were there, and the law did not basically take them into consideration. But my question would be again, do you consider, क्या आपको लगता है कि जो 92 के अंदर एक्ट हुआ, that was the proper way to go about things? I believe so now in a retrospect, because legally also, once it has been established by Supreme Court that the land belongs to the Hindus. Now, if I have my house, my land, I can break it, build it as many times as I want. So it would have been a criminal act if the court would have decided that the ownership of the land was not with the Hindus but with the Masjid Waqf board. Then it would have been an illegal act that I go and destroy somebody else's property. तो But आंदोलन but भाई, in retrospect, just allow me to complete this legal point. okay, I thought But you in completed. I apologize. but in prospect, if the land rights were always mine, so whatever I do on my land, Hmm. it is my authority to put a criminal case on somebody. And Hmm. the Ram Janmabhoomi Nyas chose to withdraw all the criminal cases against people who demolished the structure. Then. Right. So Andolan bhai, so that land belongs to all Hindus, right? You agree to that? No, it belongs to Ram Lala. So, in the context of legal framework, the Hmm. residing ideal of the temple Hmm. is a legal entity Yeah, which that's fine. which So which owns the premises, which is governed by the trust. So, the so land the of that people who site is went not there, they held were by his representatives. just one second. Yes. So, the Hmm. land at that site belongs to Ram Lala Virajman, Okay. and the action on that land has been taken by the trust member of Ramlala committee. So the land doesn't belong to all the Hindus. No, So so it belongs to so Ramlala. the people who went and took the monument down, the Babri Mosque, in whatever condition it was, who were they? Whose representatives were they? They were, set of random people, right? I mean, who went and took down the structure. So do you think what they did, because they were not representatives of that authority, what they did, like you said, it belongs to a certain group, लेकिन अगर Yeah. उन्होंने उन्हें भेजा ही नहीं था, वो उनके representatives ही नहीं थे, तो इस तरीके से तो आज अगर फॉर एग्जांपल सोचें, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक और हिंदू ग्रुप उठता है और वो कहता है कि अब जो राम मंदिर बना है वो तो गलत हिंदुओं के पास चला गया है, तो हम इस बिल्डिंग को कब्जा करने लगे हैं, वुड यू फाइंड दैट टू बी एक्सेप्टेबल थिंग?
The land title is with Ramlala Virajman as governed by the trustees. Now, the land is owned by these trustees. They believe that whosoever did that act on their property, they do not want to charge them criminally. Tomorrow, they No, might they choose don't. to But do charge. they find it to Just be hear me out. acceptable? Today they find it. Tomorrow, let's say they don't find it acceptable, they will file a case. No, no, I'm just asking, do you think this is a nice way of like, do you think wouldn't that bring chaos? अगर for example आम private situation के अंदर एक second के लिए आप note करें कि अब अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ अब मैं नहीं आपको आंदोलन जी, एग्जांपल इसमें एक चीज ऐड करनी थी मैंने। आई थिंक आप जिस जजमेंट को कह रहे हैं, जिसकी बेस पे आप लैंड क्लेम कर रहे हैं, उसी जजमेंट में डेमोलिशन के एक्ट को क्या कहा गया था, और उसी जजमेंट में उन एक सेकंड उन रैंडम लोगों के नाम लेके 28 से 30 पे केस चला था। 2020 में वो एक्विट हुए आफ्टर 3 डिकेड्स। यस यू आर ठीक राइट है, तो वो रैंडम लोग नहीं थे। एक एल के अडवाणी वगैरह बड़े नाम थे, दे वर नॉट रैंडम पीपल। सैकड़ों से मतलब जी 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 सबका जी। नाम और सीबीआई ने उस एक्विटल पे अपील भी दर्ज की हुई है, जिसपे अभी तक 3 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अपील हो रही है, क्योंकि एक आपके सेशन कोर्ट या किसी ने उन्हें एक्विट किया है 2020 में आफ्टर द जजमेंट। But बट what was the reason for acquittance? Do you लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस। No, no, that's not correct. It's because the people who own the land, like Andolanji rightfully pointed out, they did not want to press charges. so there are two And that, dimensions there are two dimensions to it Shaji. One is a criminal liability, the other one is a civil liability, right? mm, So criminal liability can also be done by state even if mm, it owns the land or doesn't own the land, right? mm, So mm. state could not find any particular charges against the set of individuals who were named to be directly involved in the act. And secondly, the landowners have not pressed any charges, and they The have acquitted. landowner will not press any charges here. Yeah. No, but that act of demolition was labeled as illegal by the Supreme Court. पर इसमें It's एक not चीज a, ये बताओ wait a second, आंदोलन जी, एक सेकंड। जब एक कोर्ट हायर, एक सेकंड, मेरा लेट मी कंप्लीट। आंदोलन जी, आप बोल रहे हैं, तब से बोल रहे हैं, एक पॉइंट रेज कर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। एक पॉइंट सुन लें। जब एक कंट्री की सुप्रीम कोर्ट एक एक्ट को इलीगल कह रही है, जो वो कर रहे हैं, वो क्रिमिनल्स हैं फिर। जी, जो भी इसको एक्ट को क्रिमिनल मानता है और इस पे फिर अब आप नाराज ना होइएगा। मैं नहीं तो मानता, आज आपकी सुप्रीम कोर्ट मानती है। एक सेकंड हाँ, मेरी Yeah, सुप्रीम let कोर्ट भी him मानती है। respond, Furkan bhai. At हाँ, least let him respond. Don't interrupt him. जिसने भी आज तक किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़ा है, उसके ऊपर यही क्रिमिनलिटी है जो आप एक्सेस कर रहे हैं उन लोगों पे। If that is the equivalent principle you want to apply, I am good. If they are criminals, then everybody who has ever broken or occupied a religious place is a criminal. I would go as Can we far agree as to that on telling principle? you in, no, no, I understand that, Can but we that's agree on my whole principle? contention. Why? So not only that, इस तरीके से तो सोचें कि कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके ऊपर डिस्प्यूट्स होती हैं। अगर लोग जाके नीली बिली बिल्डिंग्स ही तोड़ना शुरू कर देंगे, you're in for a huge issue. क्यों? You I understand? agree. बट मेरा पॉइंट नहीं समझे शादी जी। मैं ये कह रहा हूं इस आपको इक्विवेलेंस लेके चलनी पड़ेगी। आप जिस भी लेवल की क्रिमिनलिटी इसको मान रहे हो, इसको फिर यूनिवर्सली अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, I agree. इसमें तो कोई तो दो अगर राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रॉफिट आंदोलन जी। पैक्टा में जाके 365 आइडियल तोड़ी, यार 1400 साल पुरानी बात को अभी हम खोलते तो हैं, फिर लेकिन तो हम क्या we're बात कर talking रहे about the तरफ। current state of affairs in 2023, but we'll talk about 1400 years So ago as well. no, That's when we are talking about equivalence, right? You have to understand, right? The equivalence. That is why I will repeatedly, without taking names, I was suggesting something.
राइट? कि अगर जब आप अप्लाई करते हो कोई प्रिंसिपल, अगर मर्डर आज गलत है तो 2000 साल पहले गलत था, ठीक है, राइट? तो आंदोलन जी, हाउ अबाउट ऑल द हिंदू टेम्पल्स विच आर नाउ इन प्लेस ऑफ ऑल द बुद्धिस्ट टेम्पल्स, और जब उनका फांडा लगा के वहां पे मंदिर बने हाँ, तो तो मेरा सेम, ख्याल है उनके तो लिए कोई भी परेशानी चलते नहीं। हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं। सी देखिए, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। एक यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट निकालिए, आप उस बेसिस पे केस फाइल करने लायक बनाइए, उसके बाद केस जीत ले जाइए, जगह आपकी। देखिए बहुत सिंपल है। आंदोलन जी, you're mistaken अब वो that I want बुद्धिस्ट है, that place जैन or है, something मॉस्क है, in geology मुझे or कोई something. प्रॉब्लम नहीं है। जो देखें, जिसका था तो मेरा मिलना मेरा चाहिए। यहाँ पे मेरा आपसे एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था। सिंस व्हेन डू हिंदूज क्लेम दैट दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम? दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव मैंने द अभी आपको फर्स्ट एग्जांपल। डॉक्यूमेंटेड, मैं बताता हूँ दोलन जी, द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड जो केस की बात थी 1850s में हुआ है, द फर्स्ट क्लेम। उससे नहीं पहले फरमान भाई, आई एम डॉक्यूमेंटेड गोइंग क्लेम बैक नहीं टू है। द स्क्रिप्चर्स, आई एम नॉट टॉकिंग मुझे अबाउट द मुझे केसेस, मुझे आई एम मुझे टॉकिंग ओके अबाउट मैंने ओके ओके। नॉलेज। मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल दिए जो लिविंग मेमोरी में लोगों की है। 600 साल से एक गांव चप्पल और पगड़ी नहीं पहन रहा। क्यों नहीं पहन रहा? क्योंकि उसकी प्रेजेंस होते हुए भी मंदिर टूट गया। देवर सो अशेम्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन that they will only don a sandal and a slipper and a head gear post 22nd January. They have not been doing so from the last 600 years. आप लोग देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट मिल गई, पूरे 1200 पेज का एक बार जजमेंट पढ़ के देखिए। पूरी हिंदू शास्त्रों से एक एक रेफरेंस कोट करा गया है एट दी लेवल कि आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेवल इंटरसेक्शन दिया गया है वहां पे कि सरयू के इस तट से 300 कदम की दूरी पे, इसके उससे 200 कदम की दूरी पे एक्स और वाई एक्सिस बना के हिंदू शास्त्रों से कोट हुआ है, एसआई की रिपोर्ट से कोट हुआ है, लिविंग एग्जाम्पल से कोट हुआ है। मैं ऐसे कोई थोड़ी ना सुबह 8 बजे उठ के एकदम से चालू कर देगा। तो एंड नाउ आंदोलन जी, इज दैट एंड नाउ डॉक्यूमेंटेड समवेयर के वो इतने आप 1200 पेज का जजमेंट एक एक लाइन पढ़िए उसकी। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं कि वो 600 साल से इस गम के अंदर हाँ हाँ, हैं कि डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है। आपको और बताता हूं मैं। सही है। टीपू सुल्तान ransacked a village in Karnataka on the हम्म, day of Diwali. These set of people have not celebrated Diwali from the last 200, 150 years in the time of Tipu Sultan. हमारे यहाँ अगर त्योहार वाले दिन घर का कोई आदमी मर जाता है तो वो वाला त्योहार तब तक नहीं बनाया जाता जब तक उसी दिन कोई घर में बच्चा ना पैदा हो। So these are, मतलब you try to understand the patience level of individuals. These guys took it upon themselves. They were not wearing a headgear. They were feeling ashamed for 600 years. They didn't went around killing people. ठीक है, अच्छा आंदोलन जी, एक फैक्ट चेक फिर मैं कर दूं। जो एक्ट है ना वर्शिप प्लेस की प्रोटेक्शन का, उसका नाम ही 91 का एक्ट है। तो वो बिफोर बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन इन प्लेस आया था। आई थिंक जुलाई में पास हुआ है, सितंबर में इन प्लेस आया है 91, बिफोर डेमोलिशन। जो आप कह रहे थे ना, गूगल सर्च कर लो, तो मैंने चेक किया था। आई वाज स्टेटिंग इट 92 बट इट वाज 91। बट मुझे ये याद था बिफोर डेमोलिशन आया था, और इट उसके अंदर कन्फाइंस के अंदर ये बाबरी वाला केस उन्होंने नहीं डाला था। ठीक है, तो यस, ये मैंने कहा एक करेक्ट कर दूं आपको, आप टेक्निकल। when was it passed, Furkan bhai? That 91, act was 91। no, no, that act, that's the act year. When was it exactly passed in the यार parliament? मुझे जो इधर आ रहा है वो कह रहा है कि जुलाई में पास हुए, सितंबर में इन प्लेस हुए।
चेक कर ले। मुझे तो ये इधर बता रहा है कि जुलाई में पास हुआ है और सितंबर जुलाई 11 पे ये पास हुआ है और अगस्त 15 नहीं, अगस्त 15 नहीं, सॉरी, जुलाई को ये पास हुआ है और सितंबर अगस्त में कहीं ये जाके आपका इन प्लेस हुआ है जी। चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ चेंज हो इसमें तो आप You are बता right. दीजिएगा आगे। जी जी, थैंक यू जी, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक सितंबर यू 18 हाँ। जी 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 जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आगे बढ़े। बट आंदोलन जी उसमें अयोध्या एग्जेम्प्टेड है ना? जी जी, In that हाँ, एग्जेम्प्टेड है, मैंने okay, पहले ही बताया है, okay, okay, एग्जेम्प्टेड है, okay. एग्जेम्प्टेड है, नहीं, एग्जेम्प्टेड। even मैं the इसके currently साथ it is कुछ constitutionally tested. Just one small point. So currently this is constitutionally tested, being tested, whether this act can be legislated. Right. So this is being constitutionally tested, and to the best of my knowledge, it would fail the test of constitution. अच्छा ईस तुमने यहाँ पे एक बात कही कि इट इज वन ऑफ आवर प्रॉफिट सुन्नत टू ब्रेक आइडल्स. I think you're forgetting something that Mecca was always an Abrahamic वो क्या कहते हैं उसे place. ठीक है. So putting idols in Mecca in the first place is the wrong move. ठीक है. You don't, that's like taking over somebody else's religious place, just like you're complaining right now. Secondly, ये कि तुम शायद ये भूल जाते हो कि it was actually Hazrat Ibrahim, who is also known as Abraham, who is the father of the Jews and the Arabs, technically also the Christians, ठीक है, who broke the idols. And that was not because they wanted to, अगर तुम उस पूरी story को पढ़ो, it was not because he wanted to break the idol for some, वो purpose. उसने इस वजह से तोड़े थे क्योंकि वो he was kind of उनको ये बता रहा था कि ये देखो, they can't even defend themselves, how will they defend you? That was the whole point. Those were not your idols. Hubal और वो जो थे वो तुम लोगों के gods नहीं थे. ठीक है. सो टेक्निकली अगर तुम ये कहते हो कि ये हमारी सुन्नत में लिखा हुआ है कि हम जो है मंदिरों के ऊपर या किसी और की होली वो के ऊपर अपने मस्जिदें बनाते हैं. Just recently I was reading about how most of the Buddhist site in KP, Khyber Pakhtunkhwa, were Zoroastrian temples. ठीक है. उन पे टेक ओवर करके उसको बुद्धिस्ट बना दिया गया था. ठीक है. सेकेंडली, देयर आर 2 चर्चेस इन इंडिया एंड देयर आर मल्टीपल बुद्धिस्ट वो क्या कहते हैं उसे मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, जिनको हिंदू टेम्पल में बनाया शिफ्ट कर दिया गया. ठीक है. तो अब मैं ये क्या बोलूं कि is that what Hindus do? Because I don't think not every Hindu do that. I understand that those were some situations जहाँ पे कभी बुद्धिस्ट जो है जोर में आए, कभी जोरोस्ट्रियन जोर में आए, कभी हिंदू जोर में आए, तो उन लोगों ने अपना किया जो करते हैं सब लोग. ठीक है. अब टेक्निकली आप लोगों की जो अपने इंटर हिंदू कास्ट वॉर्स भी होते थे, तो एक कास्ट वॉर क्या, डिफरेंट जो छोटे छोटे से अपने अपने इलाके के किंग्स होते थे, उनके भी जब वॉर्स होते थे, तो वो हाउ दे यूज्ड टू डिस्प्ले देयर विक्ट्री. दे वुड पिक देयर गॉड फ्रॉम देयर मंदिर एंड टेक द गॉड विद देम. मतलब वो जो आप लोग की आइडल होती है ना, वो उतने साथ ले जाते थे. एंड दैट वुड बी शोड एज वो क्या कहते हैं उसको, ट्रॉफी, कि ये देखो हम जीत के आ गए. ठीक है. सो ये दैट वाज happening this is in the completely in infactual. days. This is completely infactual, एक में Medusa, ये because what आपकी you're saying नहीं, has ये no आपके ही बंदे ने आपके ही लोगों ने ये बात मुझे की थी. It's not me who's making. I did not know about the situation. मुझे मुझे मैं मुझे बता कंप्लीट कर लूं. दीजिए। मैं अच्छा कंप्लीट प्लीज. करने दो. तो टेक्निकली आई एम नॉट, देखो आंदोलन जी, आई एम नॉट इवन सेइंग कि इट हैज समथिंग टू डू विद योर रिलीजन. ठीक है. इट हैज नथिंग टू डू विद योर रिलीजन. इट वाज जस्ट पीपल डूइंग व्हाट पीपल डू. ठीक है. मुगल डिड व्हाट दे डिड बिकॉज they were in power. ठीक है. अब टेक्निकली ऑनेस्टली अभी आप लोग जो कर रहे हो वो कर रहे हो बिकॉज यू आर इन पावर. ठीक है. कल को कोई और रिलीजन आएगा पावर में तो वो करेगा जो करेगा बिकॉज दे विल बी इन पावर. फिर
that's the whole situation. But for East to go that far behind just to prove that पूरा religion का सुन्नत यही है, that's my point. That फिर तो मैं यहूदियों से भी उतनी नफरत होनी चाहिए, because Abraham is technically also यहूदियों का father. लेकिन यहूदी तो तुम्हें इतने बुरे नहीं लगते. You don't mind the Christians, you don't mind America, but you have the same, वही complaint तुम्हें वो से है, क्या कहते हैं, मुसलमानों से है, जो यहूदियों के और क्रिश्चियंस के फोरफादर ने भी किया है. That's it. जी, अब मैं आपको जो आपका जो पहला पॉइंट था that is completely infactual. So there is not a single site, right, in history where one Hindu king has demolished other Hindu king's temple, right? Lot of people नहीं, give I did not. example. नहीं, आंदोलन जी, आप मेरी अरे बात समझे. मैंने ये नहीं कहा कि सारी बात आपकी, मैं आपके सारे पॉइंट एड्रेस करूंगा. मैं आपके सारे पॉइंट एड्रेस कर मैं आपके सारे पॉइंट एड्रेस कर रहा हूँ. मैंने आपके सारे पॉइंट सुने. आंदोलन जी, अरे मैम सुनिए मेरी सुनिए, बात. मैंने ये नहीं कहा. अरे मैं मैं आपके सारे पॉइंट एड्रेस कर. अरे मैं उसने आप अरे आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरी पॉइंट यू मेड वन बाय वन, राइट. हाँ ठीक है, आप कह रही हैं कि बात पूरी मूर्ति लेके चले जाते थे, राइट. हाँ यही कहा. एक सेकंड. अरे आप बोलने दीजिए, आप 5 मिनट बोलिए. अरे आप 2 मिनट रुकिए प्लीज. मुझे एक एक करके सारे देखिए. आप कह रही हैं कि वो मूर्ति उठा के एक जगह से अपने विक्ट्री का साइन दिखाने ले जाते थे. इसका भी कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं है. दूसरा, आपने कहा बुद्धिस्ट लोग हिंदू टेंपल तोड़ देते थे, फिर हिंदू लोग बुद्धिस्ट टेंपल तोड़ देते थे. ये फेज जो आया है, ये केवल एक समय में आया है, अशोका, और उसके बाद अशोका की डायनेस्टी को जिसने बनाया. इसमें भी कोई मेजर बुद्ध मॉनेस्ट्री और कोई मेजर हिंदू टेंपल इन्वॉल्व नहीं था. So it is not like it is happening. It just happened. अरे पूरी बात सुनती नहीं आप. ये आप 5 मिनट में चुपचाप सुना ना आपकी बात, राइट. तो हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं था कि हम लोग एक दूसरे के टेंपल तोड़ें, या जैनियों के टेंपल तोड़ें, या बुद्धों के टेंपल तोड़ें. हिंदुस्तान में जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म हिंदुओं के बीच से इमर्ज हुए, एंड विदाउट परसिक्यूशन. लड़ाइयां हुई बुद्धिस्ट राजा की, हिंदू राजाओं की, पर कभी भी उसमें रिलीजियस साइट्स को इन्वॉल्व नहीं करा गया. देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, राइट. ये जो जस्टिफिकेशन होता है, आप यहां पे आज हम लोग 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं: बाबरी, अल-अक्सा एंड हागा सोफिया. ऑल 3 sites have been taken over by Muslims from other religion. हम लोग यहाँ पे, आप मुझे उस साइट का नाम बताइए. हाँ अच्छा, अब आते हैं क्रिश्चियंस पे. तो क्रिश्चियंस पे भी हम, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते. गोवा पे जब क्रिश्चियंस ने वो काम करा था जो मुस्लिम 800 साल से हिंदुस्तान में कर रहे थे, विच इज इंक्विजिशन, विच इज टॉर्चरिंग पीपल, ब्रेकिंग टेम्पल्स, किलिंग पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन. There is a whole set of discussion points around the Portuguese and the Goan Inquisition, which is widely condemned and equally problematic, which were raised several times. Jews यहाँ पे हिंदुस्तान में उन्होंने कभी आके लड़ाई झगड़ा करा नहीं हमारे साथ. वो खराब हालत में थे, आए यहाँ पे आराम से रहे. हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें ज्यूज के साथ पूरी दुनिया में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ या नहीं. सेम थिंग विद पारसी. यहाँ पे आए, आराम से रहे. हमने उनको लैंड भी दिया कि भाई, उन्होंने कहा हमारे अग्रिहारे में कोई दूसरा धर्म का बंदा आसपास नहीं आ सकता इतने किलोमीटर तक. हमने कहा ये लो लैंड, बना लो. बने हुए चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो डोंट इक्वेट समथिंग बाय फॉल्स नोशन. अच्छा, आप इसमें मैं भी कहना चाहूंगा एक पॉइंट. शाह जी एक सेकंड. ईस्ट है. अभी रिसेंटली 2 चर्चेस को टेंपल में शिफ्ट कर दिया गया है ओवरनाइट. ठीक है, आपको अगर चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ. ठीक है, कुछ क्रिश्चियंस ने हिंदुइज्म कबूल कर लिया तो उन्होंने पूरा चर्च चेंज कर दिया कि बस अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, बुद्धिस्ट जो वो है,
उसका तो पड़े हुए हैं ना, आपकी ही वो जो करती है एक्सकेवेशन, उन्होंने ही रिपोर्ट दिए थे ना कि बुद्धिस्ट के ऊपर हिंदू टेम्पल बनाए थे, ठीक है। पारसीज की जहां तक आप बात करते हैं, केपी में जो मेजोरिटी बुद्धिस्ट वो हैं, हेरिटेज वाली जगहें हैं जिनको बड़ा संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। दे वर ओरिजिनली जोरोस्ट्रियन पारसी लोगों के रिलीजियस जगह थी, बट मे बी दे डोंट केयर बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट हियर एनीमोर, ठीक है। My point is not that What Buddhists did to Parsis or Parsis did to Buddhists is एक सेकंड, not मैं बात पूरी Hindus' मैं problem बात to address. हाँ. मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं, आप फिर बोले, ठीक है। माय पॉइंट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि अब ये हुआ है तो सारे ऐसे हैं, ठीक है, सारे हिंदुइज्म तो सिखाते ही है, ठीक है। माय पॉइंट एट ईस्ट वाज बिकॉज ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सुन्नत्स, ठीक है। तो फिर सुन्नत तो मतलब फिर अगर ये चीजें अगर वो हमारे मैका जो था, वो तो कोई हुबल के लिए नहीं बना था ना, वो तो कोई आइडल्स के लिए नहीं बना था, वो तो हमारी ही जगह थी, ठीक है। तो इसमें So Medusa, does it give you the right? you think, नहीं, एक सेकेंड, I'm not done yet. अगर ये तुम लोग को लगता है कि मक्का कहीं से कोई शिवा का टेम्पल है और उस पर भी हमने टेक ओवर कर लिया है, you want it back, that's a different thing, but Mecca belongs to the Abrahamic religions, ठीक है। Mecca belongs to Muslim, ठीक है, उसमें idols रखे गए थे। Now I'm Allow not me, please. taking your right away when you say कि तुम लोग की कोई religious, एक सेकंड, when you say आपकी कोई religious है, for example, I mean a lot of people here would disagree with me, but I agree with the decision of ज्ञानवापी की बिल्डिंग देखो, साफ पता चलता है कि it used to be a temple, ठीक है। अभी डिसीजन आया नहीं है, it is still a. हाँ, लेकिन it's obvious, पता चलता है, मतलब दीवार पीछे सारी, मतलब it's just too obvious। अच्छा Medusa जी, allow me one point to make a one. मैं बात पूरी कर लूं, ठीक है। Okay. तो मैका में अगर कोई बंदा मुझे ये मिसाल देता है कि हमारी ही जगह से आइडल्स को निकाला गया तो ये अब सुन्नत बन गई कि दूसरों की, इट मेक्स नो सेंस, इट्स नॉट सेंसिबल, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट इफ यू थिंक मैका बिलोंग्स टू यू। So Medusa, I understand that you are emotional about the religious site you believe to be yours, and this is perfectly all right. We also have emotion attached I to just sounded our tense. religious. But Andolan ji, allow me one point. इसके बाद आप बोले ना. So हाँ. Medusa, so this is just a claim of yours because you don't claim that building to be constructed by Abraham. In fact, there is full document of the Abraham's travel which Jews and Christians subscribe to, where Abraham never passed that area 400 kilometers left or right. Right? So that's point number one. Point number two, okay, still let's say you talk the same thing about Mecca, fair enough, right? What about Al-Aqsa? Was it another person's religious site or not? What about Hagia Sophia? Was it other person's religious site or not? अच्छा, आप मुझसे जवाब चाहते हैं? फर्स्ट जब हाया सोफिया, एक सेकंड, एक पॉइंट बोलने दीजिए मुझे, एक पॉइंट बोलने दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर, मेरे को सिर्फ एक पॉइंट बोलना है मुझे। Medusa ji, kindly reflect on what you just said. You begin with a statement that how can we have idols in Makkah? So what are you trying to insinuate is that the Muslims cannot coexist with the people of other faith. And this is what, hold Medusa ji, you can clarify. Allow me. And this is what we have seen in India with the destruction of the idols in Kaaba. तो फिर हिंदू ही हो जाते हैं ना, क्या जरूरत है मुसलमान बनने की? So this is what the insinuation is, na, that people cannot coexist. And why should, tell me, why should, hold Medusa ji, allow me yaar, मेरे को बोलने तो दीजिए. Medusa ji, then why should the leaders of the Muslim community should not practice the same exact thing? Why should they allow the idols, the belief system of other people to coexist? Should they not destroy that, following the role model? Coexisting doesn't mean कि मैं जो हूँ आप लोगों की religious idols जो है अपने काबा में रख लूँ. I'm talking about Kaaba. Mecca is a city. Kaaba is the specific. Agree with this point, right? Medusa. I agree with this point. So you are saying it should not be allowed in Kaaba. Get it? But tell me, sorry, Muslims, I confused. I forgot to say Kaaba instead of Mecca. I'm sorry. Yeah, it's okay. I agree.
Chale, I accept this argument of yours that it should not be allowed in Kaaba. But tell me, जो आपके leaders होंगे, whenever they win a place or whenever they overpopulate or occupy that place, so they will also follow that path only, na? And this is what we have the problem with, and we are dealing with this problem now. नहीं नहीं क्या Right? मतलब Do you understand the concern that the historicals, when the Babar came here in the Babar Nama, when he rode to destroy the temples, this is what the people of India are dealing with. And that is why people here point out that the polarization will increase, because this there was are a the lot of injustice which नहीं नहीं was नहीं done by the Muslim leaders ये here. लॉजिक And the no rational ये people लॉजिक should इस वजह से recognize it. एग्जैक्टली होता कि I'm अगर not saying if कि keep idols in Makkah, wanted Medusa ji. I'm मेरे not भाई saying बात keep सुन idols in Makkah. हाँ जी, if go ahead. if the Mughal wanted to destroy all your temples because they were Hindu temples, you wouldn't have a single temple right now, don't you think? That's why it's actually they face resistance. just हाँ जी, हाँ just जी, just just hold on. So I do not Resistance. know whether no, hold on, Medusa, hold on. So what you're saying is correct. It exactly what happened. So the Mughals and the Muslim dynasties primarily had their influence on the northern part of India, right? Hmm. If you go to south of India, we have got temples which have a area of 5 square kilometers, 20 square kilometers, 30 square kilometers. In North India, we do not find a single temple of that वो कैलाश में magnitude. जो टेम्पल बना Of हुआ that, है पहाड़ के अंदर हाँ वो तो खंडित मंदिर है, वो भी तोड़ा, वो भी मुसलमानों ने तोड़ा, उनको हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। वो जो मंदिर है उसका वो तोड़ नहीं पाए क्योंकि वो रॉक हार्ड बना हुआ था। दे ट्राइड 1 year with 2000 people to you break don't that have a temple. single what you're saying Andolan ji कि you don't have a single temple just, that dates back to just, before the just, Mughals, but Pakistan just, have temples that dates before the Mughals. एक बार मेरी बात सुनिए आप, राइट? सो जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये कई बार आइटरेशंस हुए। सो लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट सोमनाथ फॉर एग्जांपल, सोमनाथ वाज बिल्ट, रीबिल्ट मल्टीपल टाइम्स। जब मुस्लिम इन्फ्लुएंस बढ़ता था तोड़ दिया जाता था, उसके बाद उसको रीबिल्ड कर दिया जाता था, राइट? सेम थिंग हैपेंड टू मेनी टेम्पल्स। तो जो ग्रैंड टेम्पल का जो हमारे पुराने बनते थे टेम्पल अक्रॉस इंडिया, जहां जहां मुस्लिम इन्फ्लुएंस नहीं था, जहां जहां मुस्लिम रूल नहीं था, वहां पे मेगा टेम्पल्स बने हुए हैं। और जहां जहां पे मुस्लिम टेम्पल्स, जहां पे मुस्लिम इन्फ्लुएंस था, वहां पे मतलब केवल छोटे छोटे टेम्पल बचे हुए जो 5 बार तोड़ के गए, जैसे मुस्लिम इन्फ्लुएंस खत्म हुआ फिर उसको रीबिल्ड करा, इस तरह से। तो ये जो आप बात कह रही हो वो सही कह रही हो। मुस्लिम जहां पे थे, जैसे ही पावर में आते थे वैसे ही टेम्पल तोड़ते। The major temples, Medusa ji, you are confusing between major Temples, temples. आंदोलन जी, तो आंदोलन जी एक सवाल पूछ सकते हैं? Pakistan. जी जी अच्छा, you're जी, अब मुझे ये saying बताएं, major temples, right? सॉरी मेडूसा, मैं ये अभी जानना चाह अभी 3 दिन पहले, अभी 1 हफ्ता पहले हिंगलाज माता मंदिर आपने पाकिस्तान में तोड़ा। नहीं वो नहीं है, वो लेकिन नहीं, जी, वो दूसरा है सुप्रीम वो अच्छा, नईमा जी प्लीज गो अहेड। जी मैं जी आंदोलन जी से ये पूछना चाह रही हूँ, अब ये इस वक्त आप लोगों ने लिस्ट कोई बनाई है कि कितने टोटल मंदिर जो है मुस्लिम्स ने उन पे मस्जिदें बनाई है और उनको अब तोड़ना है? कोई ऐसा जी है है, आपके तोड़ना पास? नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 40,000 क्या 38 to 40,000 ऐसे डिस्प्यूटेड साइट्स हैं जहां पे क्लेम बनता है। तो अब हमारे पास एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। 1992 का ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये हिंड्रेंस बना हुआ है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जैसे ही टेस्ट होगी, राम मंदिर वाला जजमेंट रिपीटेडली फॉलो अप होगा। आप एक्सकवेट करेंगे, हिंदू साइट आपको मिलेगी, आप उस लैंड को रिक्लेम करेंगे और टेम्पल बनवाएंगे। तो दैट दोज आर 38 to 40,000 साइट। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी है मस्जिद के, मुझे कोई एतराज नहीं अगर आप सारी मसाजिद जो है ना उनको आप मंदिर में शिफ्ट नहीं करेंगे। हमें मस्जिद को मंदिर में शिफ्ट नहीं करना है। नहीं अब आप हमारे मुझे ये बताएं। हाँ, तो मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है किसी के धार्मिक स्थलों को तोड़ने की, ना मस्जिदों को, ना चर्चों को, ना गिरजाघरों को, ना सिनेगॉग्स को,
राइट? हमारे जो टेम्पल थे जिनको तोड़ा गया, वहां पे अगर लीगली स्टैब्लिश हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट से, और जिस पैरामीटर्स पे राम टेम्पल का केस का जजमेंट हुआ है, जो जो पैरामीटर्स पे, उसके बेसिस पे अगर स्टैब्लिश होता है, तो देन वी विल क्लेम इट, इफ द कोर्ट अलाउज इट वी विल क्लेम इट एंड रीबिल्ड दैट टेम्पल। अच्छा, सॉरी, ये जो अभी मणिपुर में 250 चर्चेस को जलाया गया है, और वहाँ पे भी जो मेटीज हैं, ख़ासतौर से हिंदूज हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इनको जलाया गया इसलिए कि ये भी मंदिर कोई कोई रहा है बीच में, तो उनके बारे में क्या प्लान है? ये गलत हुआ। देखिए वहां पे मस्जिद भी, वहां पे चर्चेस भी तोड़े गए हैं, वहां पे मंदिर भी तोड़े गए हैं। दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई है, 2-3 महीने से चल रही है। मेरे ख्याल से जिसकी जो हानि हुई है सरकारी खर्चे से, वो दोबारा उन टेम्पल्स और उन चर्चेस को रिबिल्ड करना चाहिए, एंड दैट्स अ जस्ट थिंग टू डू। तो मसला सिर्फ मस्जिदों का है, सिर्फ कि मस्जिद नहीं को नहीं आप सर, नहीं नहीं, नहीं, आप समझिए नहीं। हमें मस्जिदों से कोई मसला नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम लोगों ने तो ऑफर भी किया था कि ये 3 टेम्पल हमें दे दीजिए, हम बाकी 38,000 से लीगल क्लेम वापस ले लेंगे, मस्जिद पे पैसा भी लगाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। लेकिन वो पूरा समरली विड्रॉ कर दिया गया था। वी वर थ्रोन आउट ऑफ द नेगोशिएशन टेबल, एंड देन वी सेड कि अगर आपने नेगोशिएशन रिजेक्ट कर दिया तो लीगली अब पूरे 38,000 देंगे। जो आप एग्जाम्पल दे रही है वो एग्जाम्पल दे रही है दंगों में अगर किसी की जेन्युइन साइट डिस्ट्रॉय हुई है, उसको बनाना, वो सबके पैसे से बने तो ज्यादा होते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा चर्च है जो मंदिर तोड़ के बना है, जैसा कि गोवा में एक आध साइट्स है, तो वहां पे भी जो 38,000 डिस्प्यूटेड साइट्स है उसके चर्चेस भी हैं। हम मंदिरों के हिसाब से देख रहे हैं 38,000 डिस्प्यूटेड साइट, मस्जिदों के हिसाब से नहीं देख रहे, उसमें चर्चेस भी हैं, नहीं, तो तो वो ये भी हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा? पहले तोड़ो फिर बनाओ, इससे अच्छा नहीं कोई नई जगह पे बना लो, आधी प्राइस आप लोग बचा लोगे, मतलब नहीं देखिए सीरियसली। इसमें हाँ नहीं देखिए, वी आर नॉट वरीड अबाउट मनी, राइट? एट द एंड ऑफ द डे हमें तो जो देखिए हमें तो बार बार यहाँ वापस आना है, तो हमारे पास कमाने की अपॉर्चुनिटी एक जन्म में नहीं सैकड़ों जन्मों में, राइट? टू मेक मनी, राइट? वी हैव टू मैं तो कम हियर भूल गई, 80। थोड़ा आंसर दो मैं। सो यू नो, तो चले इसलिए दैट्स चले, नॉट अ, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपको कभी पर्सपेक्टिव देखना है ना, गो टू एनी साउथ इंडियन टेम्पल। I mean, these were built anywhere between, starting जो इस समय anywhere between 6th century AD all the way up to 11th 12th century AD, right? Look at the grandeur of those आप इधर कंबोडिया चले जाइए, जो अंकोर वाट का वो लाइफ टेम्पल नहीं रहा है, लेकिन उसका स्केल और साइज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस साइट, राइट? उसका जब आप स्केल और वो देखेंगे ग्रैंड्योर, तो आपको अंदाजा लगेगा कि हम लोग पैसा खर्चा करने में कभी पीछे नहीं रहे। चले, ठीक है। थैंक यू आंदोलन जी। आई विल गो स्ट्रेट टू शाहजी। शाहजी, प्लीज गो अहेड। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। इट वाज बेसिकली क्लेम्ड कि ये मुसलमानों की सुन्नत है टू ब्रेक मंदिर्स और अदर रिलीजियस प्लेसेस। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप मेजॉरिटी ऑफ यूरोप को देखें तो majority of those places of worship used to be pagan, which converted into churches at some stage. अगर आप ज़ोरोएस्ट्रियंस को देखें तो डिफरेंट रिलीजन्स आए, ज़ोरोएस्ट्रियंस पे भी यही चीज़ हुई, and this is what happens when the local populace changes their belief and stuff. They don't break the building. What they usually do, in most cases, I'm not talking about all cases, they basically revert to that thing and they convert the existing complexes into something which which is believed. अब आप सोचें कि आप जाके ये बात कहें कि जो हाया सोफिया है, that was originally built upon a site which was a pagan site. अगर आप फॉर इंस्टेंस वेटिकन को भी देखें तो उसके बारे में भी these stories exist कि it was originally a pagan site.
But there are not many pagans in Europe today कि अगर हम जाके कहे कि वही लोग जिन्होंने उसको रिप्लेस किया था वो वही लोग कन्वर्ट हुए थे। दूसरी बात ये कि अगर अगर इस्लाम इस बात की इजाज़त देता होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पेरेटिव, when the second Khalif of Muslims, Hazrat Umar bin Khattab, when he basically went into Jerusalem, and when he was asked to pray at the holies of the holies, which happens to be a very imperative place for the Christians. तो उस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ था? उस पॉइंट पे ये हुआ था, he made a very specific statement. And his statement was कि अगर आज मैंने यहाँ पे नमाज पढ़ लिया, if I perform salah over here, कल मैं इन लोगों का उल्ले लगा दूँ, कल generations upon generations are going to come and create an affinity के हमारे उल्ले लमार ने, हमारे खलीफ ने इस जगह के ऊपर प्रेयर रिसाइट की थी, सलाह परफॉर्म की थी, he prayed over here, and I don't want to begin that tradition. लेकिन on top of that, he went as far as saying कि ये जो religious area है, ये जो Dome of the Rock है, which are the remains of the Temple of Solomon, जो पहले डिस्ट्रॉय हुआ है, यहाँ पे आपने ज्यूज को आने नहीं देते आप लोग, you have not let the Jews enter. So in our rule, do you know after centuries we're going to have the Jews return to this place? And he said that this is a revered place for Muslims, this is a revered place for the Christians, and it's a revered place for the Jews, and they are also entitled to be there. तो अगर तो वो सुन्नत होती है और ये उस तरीके से होता, आप काबा के साथ उस चीज को मिक्स कर रहे हैं, दैट इज अनदर डिबेट ऑल टुगेदर। इसके ऊपर हम जा सकते हैं अगर हम जाना चाहें, लेकिन देयर विल बी नो पर्पस। तो हमारा प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट हो जाता है कि at the end of the day it's something which has to be shared if other religious places also have a claim on a certain location, and that is what it boils down to. तो जी एज अ सुन्नत एटलीस्ट फॉर द ऑडियंस आप ये चीज सर्च कर सकते हैं व्हाट दैट लॉ वाज, what the statement of Umar bin Khattab was, रजी ताला अन्हु, may Allah be pleased with him, in those regards. Can I make a small point? जी जी बोलिए। So, did he change the character of the place from an Islamic place to a Jew place or a Christian place? No, he did not. No, he did not. Fair enough. That's the limited point I wanted to make. He did not. He did not change any Acha, it's character. time to wrap up, Shaji. So, I mean, In regards to the closing point, in not my closing comment, but the point I was closing, उसके अंदर ये है कि फर्दर अगर आप एक चीज देखते हैं तो मस्जिद अल अक्सा तक हम पहुंचे नहीं, और हम हाया सोफिया के ऊपर भी हमने ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन विद द लिमिटेड टाइम एक एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मस्जिद अल अक्सा was actually built at the time of the Umayyads. And it is noted that when Hazrat Amir Muawiyah came into power, he was the first one to create any kind of Muslim structure there. वो एक कमरा था, and then later on under the Umayyads, Masjid al-Aqsa was constructed. So this will also be good to examine कि कंपेयर टू हजरत उमर फतवा, उमैयाद रूल के अंदर जो एक्शंस टेक प्लेस हुए उनकी क्या वैलिडिटी है, दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू प्रेसिडेंस, एंड आई थिंक वहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं। बाकी सारी जगहें जो आपको बिजेंटीन्स और दूसरे नजर आते हैं, दैट अगेन इज फ्रॉम दैट सेम टाइम पीरियड कि जब हाया सफिया को उस तरीके से किया। तो these were some of the points which I wanted to bring to attention, और हम next time most likely इस पे बात करेंगे।
For now, आप लोग अपनी closing statements दें. I'll first go to Andolan ji. Andolan ji, what are your closing statements? Please go ahead. See, one is irrespective of the, quotation from historical sources, the actual history is entirely different. Be it Spain, be it Indian subcontinent, be it any other place where Islamic conquest happened, many religious sites were taken down, converted to Islamic sites. And there is a complete historical record of all the places wherever there has been Islam. Right? You may quote one quote from here, second quote from there, but the historical reality is entirely different from what you are quoting. Right? We in India are gawah of that. People in Spain are gawah of that. They had to reconvert a lot of places back to churches from, masjid. There is complete record of that. So let's not be dismissive of the fact whether it is part of Islam or whether it is not part of Islam. You guys know Islam. You be the better judge of it. But when it comes to historicity of Islamic invasions, they were rampantly religious rights were destroyed. So that's the limited point I wanted to make. Thank you very much. Now, next, I will go to Naima ji. Naima ji. I think यार Naima. शाह जी, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है आप लोगों को सुनते सुनते, और आप आई डोंट नो, यू आर ऑल ओवर प्लेस कि आप डिस्कस क्या कर रहे हैं. आप हागिया नहीं, सोफिया आप भी अपने फाइनल कमेंट्स दें ना. तो एक चीज मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि ये जो कन्वर्शंस की बात हो रही थी, या कन्वर्टिंग आई मीन रिलीजियस प्लेसेस फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जो कश्मीर के बारे में, हालांकि ये जो इंडिया में एक स्टोरी आजकल नरेटिव जो चल रहा है ना कि 5000 years ओल्ड हमें वापस लाना है, कि वो जो हमारी सिविलाइजेशन थी वगैरह वगैरह, तो ये उसी के पर्सपेक्टिव में सारा चल रहा है कि भाई अब आपको मंदिर जो है, मस्जिद जो है, मंदिर में चेंज करने हैं, उसके साथ घर वापसी भी होगी ज़रूरी डेफिनेटली, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर आप मस्जिद को मंदिर में वापस तब्दील करेंगे, तो लोग जब नहीं बनेंगे तो उनको संभालने वाले भी तो लोग होने चाहिए. तो वो घर वापसी का भी एक प्रोसेस शुरू हुआ है. लेकिन जो कश्मीर रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि जो अभी डिबंक की जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी जो थियरीज चल रही हैं. एक तो ये कि जो कश्मीरी हैं, और इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी है कि बहुत ज़्यादा जो ये मुस्लिम्स के बारे में कह रहे हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ दीज मुस्लिम्स जो कन्वर्शन जिस वक्त हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, उसमें से वो निकले हैं और फिर मुस्लिम हो गए हैं. तो मोस्टली दे आर नॉट हिंदूज, वो बुद्धिज़्म से कन्वर्ट हो गए हैं. एक तो ये. दूसरा ये कि कश्मीर में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म का नहीं था जितना बुद्धिज़्म का था, और इसीलिए आप देखेंगे कि वर्ल्ड की 3rd बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो कश्मीर में हुई है. और आज भी वहाँ पे जो उस वक्त जो कॉन्फ्रेंस हुई, और उस वक्त उन्होंने जो सारा वो डिलिब्रेशंस थे वो कॉपर प्लेट्स पे लिखे थे, और वो कॉपर प्लेट्स जो हैं आज भी वहाँ पे बरीड है, जिसके कुछ हमने पीसेस जो हमें निकाले, क्योंकि माई फादर इन लॉ जो है थे वो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, और उन्होंने काफ़ी इस पे लिखा भी है बहुत ज़्यादा. और ये कॉन्फ्रेंस भी, क्योंकि वो जापान और ये जो चाइनीज़ दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन दैट, तो वो एक कुछ हिस्ट्रीज भी, मैं इस वक्त नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको पूरा डिबंक किया है कि कश्मीर में हिंदुइज्म जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित था, या बहुत ज़्यादा आई मीन पीपल वर फॉलोइंग दैट. एक्चुअली इट वाज आई मीन बुद्धिज़्म, कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे. एंड आफ्टर दैट जब वहाँ पे थोड़ा सा वो टर्मोइल शुरू हुआ, देन दे चेंज्ड इनटू इस्लाम एंड ऑल दैट. तो वो उस पर बात की जा सकती है कभी, गिविंग द रेफरेंसेस फ्रॉम द बुक्स. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक चीज़ जो है, इंडिया जो अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है डेफिनेटली,
2047 तक जो रोड मैप है वो दिया गया है। लेकिन अगर उससे सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, मुसलमान डिसम एम्पावर तो है ही, अगर उससे ख़त्म हो जाएंगे बाकी सारी चीज़ें उनकी जो भी हैं, तो अगर हिंदुओं को उससे सुकून मिलेगा, आई मीन दे विल गेट पीस, तो मैं समझती हूँ कि मुसलमानों को भी फिर सोचना चाहिए कि हम क्या करें और किस तरह रहें। और जब को एग्जिस्टेंस का जो एक फार्मूला होता था वो अब नहीं है, तो सोचना होगा कि क्या करेंगे। लेकिन दुआ करेंगे कि सुकून हो, आराम हो, चैन हो, और सभी जो को एग्जिस्टेंस में रहते थे पहले भी रहे हैं। अब अगर किसी को मंजूर नहीं है तो फिर देखेंगे लोग सारे कि हम क्या करेंगे, किस तरह रिएक्ट करेंगे और किस तरह जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक 10 सेकेंड दिस थिंग, तो नैमा जी, आई कैन प्रॉमिस यू वी वुड फॉलो द कश्मीर मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस, बिकॉज हम लोग पहले सब अच्छे से रह रहे थे, आप शायद कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं, एग्जैक्टली सेम मॉडल फॉलो करेंगे, डोंट नो वरी। चलिए, थैंक यू आंदोलन जी। आई थिंक वी आर एट द क्लोजिंग जी, रिमार्क्स। तो so we're going to next go to East. जी जी जी, मेरा एक आखिरी बस मैसेज ही है सभी, मतलब रैशनल लोगों से। एक एक बात ये कही जाती है कि स्पीक ट्रूथ इवन इफ इट अगेंस्ट यू। तो if people, on the contrary, if people operate in a bad faith, if they do not want to recognize, यहाँ पे छोटी सी एक उसकी बात हुई कि लव जिहाद के केसेस नहीं होते, ग्रूमिंग गैंग के केस नहीं होते, यहाँ पे कश्मीर में टेम्पल्स नहीं तोड़े गए, if they make these statements, so what would I as a person think? मतलब I would, instead of recognizing a wrongdoing, they are simply saying that nothing has been done, everything is all goody goody. So in the people's mind, those person will be seen as an active perpetrator of these crimes. So if we want peace, so people have to drop their bad faith. Matlab, if we wish for faith, of course, I also, and of course, the every Hindu person wants to coexist, but it's not gonna happen if people will continue to operate in bad faith. Ji, thank you. Thank you. Sid. यस, थैंक यू शाह जी। मैं अपने लास्ट वर्ड्स के अंदर जो है, हमारी सारी डिस्कशन के अंदर कुछ इस तरह की बातें की गई हैं कि मैं खामोशी इख्तियार ही कर गया था। मेरे लास्ट वर्ड्स कुछ ज़्यादा लंबे होंगे। पहली तो बात ये कि जो ये कहा गया ना कि इट्स द इस्लामिक नोशन टू ब्रेक आइडल्स, आई कंप्लीटली एग्री। आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक मोहम्मद, नहीं 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 तोड़ने चाहिए। इस्लाम इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग आइडल्स, बट नॉट द फिजिकल वंस। जो वहाँ मक्का के अंदर फिजिकल आइडल्स पड़े हुए थे ना, काबा के मतवली कौन थे? काबा के मतवली बनी हाशिम थे। बनी हाशिम के सरदार कौन थे? बनी हाशिम के सरदार हमारे आका थे। उनके चचा की फोत होने के बाद, हजरत हमजा के फोत होने के बाद, फिर तो अबू लहब भी जो था बदर के अंदर मारा गया। अबू जहल तो खैर वो बनी हाशिम का था नहीं। हु वाज नेक्स्ट इन लाइन टू ओन काबा? इट वाज आवर लॉर्ड, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने बताना था कि काबे के अंदर क्या होगा। वो उनका हर तरीके से हक था, और उन्होंने अपना हक, अपने हक से उन्होंने वो चीज़ की जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि मेरे घर से काबा क्या है? काबा इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन दिस अर्थ।
The physical representations of idols was removed, but Islam is more about breaking the metaphorical representations of idols throughout the world. And if there are a group of Muslims out there who want to be apologetic about it, well, I feel sorry for all of those Muslims because I don't know why you're Muslim to begin with. यानी कि क्या कर रहे हो? दूसरी side, the other side is very green. If you're not here to break the idols in your mind and in your heart, why even bother? It's hard being a Muslim. It's not an easy job. I mean, मजा तो नहीं आता यार इस्लाम के ऊपर चल के मुश्किल काम है मत बच जाती है बंदे की वी डू इट बिकॉज इट इज ट्रू और जहां तक बात है कि वहां पे मंदिर थे तो मुसलमानों ने आके मंदिर तोड़े चार पांच चीजें इसके अंदर हैं जो कि आप कंप्लीटली भूल रहे हैं इस्लाम के कवानीन हैं जंग के उन कवानीन में से एक कानून ये भी है कि आपने जिस कौम को फतह करना है उस कौम की इबादत गाहों को तबाह नहीं करना कोई भी मौलवी किसी भी फिक्र का इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता आपने अगर इस्लाम को जज करना है यू आर नॉट गोइंग टू जज इस्लाम बाय व्हाट आई डू और बाय व्हाट फुरकान भाई डज और बाय व्हाट शाहजी डज और बाय व्हाट मेडूसा डज और खादम हुसैन रिजवी और इमरान खान will do it by the book. People are shit. 99% of the population of the world is shit. आपने इस्लाम के ऊपर बात करनी है देन यू गो टू द बुक जहां पे लिखा है कि ये नहीं करना आई मीन जो उनसे असूल लिखे गए हैं वो गालिबन 14 असूल हैं जो मेजर असूल हैं जिहाद के इस्लाम के नाम पे अगर आपने लड़ाई करनी है तो उसको जिहाद कहते हैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन जिहाद अगर कोई मुसलमान जिहाद को कहता है कि नहीं जिहाद नहीं करना चाहिए मुझे उसके ईमान पे शक होता है मैं उसको आई थिंक ही इज अ हाफ हार्टेड मुस्लिम और वो रैप के अंदर है ना देयर इज नो सच थिंग एज अ हाफ वे क्रुक्ड वो देयर इज नो सच थिंग एज अ मुस्लिम हु सेज जिहाद नहीं होना चाहिए इट्स ऑल ही इज जस्ट बीइंग अ पर्सन ऑफ कन्वीनियंस मगर जिहाद अगर करना है तो फिर जिहाद के तो असूल है ना उस असूलों के अंदर आप मंदिर को तोड़ नहीं सकते हो हाँ मुगलों ने क्या किया मुगल थे जो मुगलों के अंदर से मुसलमान हो गए उन्होंने अपना नाम जो है अब्दुल्ला और कासिम और मेरे ख्याल से गालिब भी जो है वो मुगल ही था पीछे से तो वो रख के उन्होंने वही किया जो वो शुरू से करते आ रहे हैं जब वो लोग चंगेज खान का मेरे ख्याल से वो सूरज की पूजा करते थे चंगेज खान के दौर के अंदर तो तब क्या करते थे वो यही करते थे जब आप स्टेप्स के अंदर चले जाते हैं हुन्स के इलाके में या खनात के बारे में पढ़ते हैं दे डिड नॉट एक्चुअली नीड टेम्पल्स टू डिस्ट्रॉय दे नीडेड some structure to destroy and it was very habitual for all the Mongols to destroy structures that are made out of solid things that have any kind of even if it does not have any kind of significance if they think that the other party holds that place with a significance let it be a toiletry they will destroy it just to shit on me that's what the Mongols did from the steppes to subcontinent all the way up to Turkey. That's exactly what they did because that is what they used to do. These were nomad people who were much more comfortable on horseback than in temples or houses. They were tent dwellers. आप उस चीज को इस्लाम के ऊपर जब डालते हैं दैट इज रॉन्ग उसके बाद आप कहते हैं कि वहां पे मंदिर थे लिहाजा हम जो है वो मंदिरों को वापस लेके आना है टेम्पल्स unless they have a significance just like all the mosques do not hold divine sanctity मैं अपने घर के बाहर जो सा मंदिर बना सकता हूं और मस्जिद भी बना सकता हूं इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिवाइन होली प्लेस yes there are some temples that hold
such significance, they are not 38,000 of them. वो लोगों ने जो किया उसकी वो लोग जो थे, they were invaders. These people were invaders, unapologetically invaders. They were invading. That was what they were supposed to do. That is what their job was. They were invaders, Mongols, nomads. They had been doing it. Other people had been doing it to you as well, from both sides. Actually, I did not. Quite recently, I learned it was not just the Mount of Hindkush from where people came in and invaded these lands. People invaded these lands from the sea, all the way down from the south. Indonesia से भी आए थे, थाईलैंड से भी आए थे, लाओस से भी आए थे. This was basically hunting ground of the world, or that region, because easy people ना. बात ये है कि जो वहां पे रह गए थे ना, वो इन्वेडर्स नहीं थे, वो आपके लोग थे, और आपने अपने लोगों के साथ जुल्म किया, ये कह के भाई ये हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, वी आर गोइंग टू अदराइज देम. फिर आंदोलन साहब ने कहा कि जी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में क्या होता है वैसा ही होगा. बेसिकली आंदोलन साहब जो है वो धमकी देने की कोशिश कर रहे थे टू इंडियन मुस्लिम्स. आई मीन, वाओ, अगर आपने यही क्वेश्चन करना है, आई हार्डली कंसिडर, आई एम इन पंजाब, आई एम नॉट इन सिंध, तो मुझे नहीं पता कि हिंदुओं का क्या सिनेरियो है. मैं अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ के अंदर सिर्फ 2 हिंदू फैमिलीज से मिला हूँ. वन ऑफ देम कन्वर्टेड, वन ऑफ देम वेंट इनटू दुबई. आप ये कह सकते हैं कि वो यहाँ से भाग के गए हैं, लेकिन फिर हमें ये भी कहना पड़ेगा यहाँ से मुसलमान भी भाग के ही जा रहे हैं, बिकॉज उनकी लाइफ को खतरा है, एंड दे आर, करने वाली बात करें. और अगर आप कहते हैं कि जो उनसे कन्वर्ट हुए थे वो फोर्सफुली कन्वर्ट हुए थे, तो आई मीन, इफ यू इंसिस्ट ऑन इट, मैं उनको यहाँ पे वकार, इस वक्त उनका नाम वकारुल इस्लाम है, तो मैं आपकी उनसे कभी भी बात करवा सकता हूँ कि वो किस तरह कन्वर्ट हुए थे. कोई माई का लाल वकारुल इस्लाम को जोर जबरदस्ती से कन्वर्ट नहीं था कर सकता. ये सियालकोट है. और यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है? हाँ, there are circumstances where outbursts happens, but that is not because they are minorities, but that is because people are shit. They could very well be Muslims who some other person did not like. 2 साल पहले मुझे लगा था शिया सुन्नी फसाद सारे खत्म हो गए. 2 साल पहले जो है सियालकोट के अंदर 2 शियों का कत्ल हुआ था. तो it is the media's job to make something which it is not. कहा गया कि भी सुन्नियों ने शियों को मार दिया, सुन्नियों ने शियों को मार दिया. जो सियालकोट में रहने वाले लोग थे उनको पता था कि 30 साल पुराना स्पिरिट वालों और बर्फ वालों का झगड़ा है. तो माइनॉरिटीज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन पाकिस्तान में परसिक्यूट नहीं होती हैं. पाकिस्तान में हर कोई परसिक्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सा बूट का ऑर्डर चलता है. And if you want to say that is the Islamization, no, it is not. It is basically fascism. This is called dictatorship in its worst form, in which the dictator is actually not the dictator, but they're doing it anyways. उसको आप इस्लाम के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर प्लीज अप्लाई ना करें. Thank you. Thank you very much, Furqan. That was it. Thank you, Shaji. I think it was a very interesting discussion. A bit going here and there, like Naimaji pointed out. But that happens in discussions, I think. My closing statement would just be on Babri, because हमने उसी को touch किया आज, उसी पे discussion की. It wasn't much on the 2 other places. So जो उसकी रूलिंग की बेस पे उस साइट की इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये हमारी साइट थी, वो उसी रूलिंग को डिनाई भी कर रहे हैं कि वो एक गलत एक्ट था, क्योंकि उसी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें उस एक्ट ऑफ डेमोलिशन को इलीगल करार दिया गया. दे कैटेगोरिकली सेड के जो एक्ट ऑफ डेमोलिशन इन 93 हुई है वो एक इलीगल एक्ट था, और 28 से 30 बंदे
उसमें जो नामजद थे नेम्ड इन द जो ये डेमोलिशन में थे उनमें बहुत बड़े बड़े नाम थे. दे वर नॉट रैंडम पीपल. वो 80s से स्टार्ट करके उसमें इन्वॉल्व थे. इंसाइट करने में बाकी लैक ऑफ एविडेंस पे वो छोड़े गए. अपील अभी भी चल रही है. जो जिस एक्ट को ये कह रहे हैं कि वो चैलेंज हो जाएगा, आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव एक्ट. इट्स समथिंग व्हिच आई थिंक के चेंज कर सकता है. और द इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट आई टोटली इंडोर्स. उन्होंने एक टाइम पीरियड सेट कर दिया कि 47 के बाद जो जो था वो उसी तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप 200 साल 500 साल टाइम पीरियड आप एक्सटेंड करते जाएं, आप किसी भी चीज का कहीं भी कर सकते हैं. तो जो टाइम पीरियड सेट कर दिया है, लीज भी होती है तो उसका टाइम पीरियड होता है. तो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव एक्ट, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है हार्मनी बढ़ेगी ना कि कम होगी. अब अगर मेजोरिटी में आके इस तरह के एक्ट्स रिट्रैक्ट करके नए एक्ट्स लाएंगे कि जहां लेजिटिमेसी साबित हो जाए वो हमारी साइड हो गई, तो लाइक अभी भी मैं इनसे आंदोलन और रीस बैठे हैं, इनसे कहूंगा उस जजमेंट से मुझे वो पैरा ला के दिखा दें जहां वो कह रहे हैं कैटेगोरिकली एविडेंस की बेस पे कि ये साइट इसी तरह थी और वो साबित हो गई है और इसकी बेस पे हम जजमेंट दे रहे हैं. वो the context was pretty much different जिसकी बेस पे वो जजमेंट आई थी. इट वाजंट लाइक दैट. आखिरी पॉइंट में फिर जी आंदोलन जी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स है. यू कैन प्रोवाइड एनी थिंग लेटर. ठीक है. इट्स नॉट अ बैक एंड फोर्थ. जो जजमेंट थी उसे आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ वेरी फेयर जजमेंट. आई वुड से there was no other way to resolve this Babri Mosque conflict, और उसमें मुस्लिम्स ने भी उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने अपील नहीं की. उसके बाद they agreed to the judgment और उन्होंने कहा करते. लेकिन वो उस साइट को किसको दिया है, क्या दिया है, आई थिंक इट्स अ नेशनल आपका कोई मॉन्यूमेंट या क्या कहते हैं, आई डोंट नो. ट्रस्ट जी बना जी के वो जी 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 जी. हम्म. तो दैट इज अ वेरी फेयर जजमेंट. जिस तरह आप इसे पोर्ट्रे करते हैं उस तरह नहीं है. तो मैं यही कहूंगा कि जजमेंट जाके जो भी हमारी ऑडियंस है प्लीज जाके पढ़े. जो ये क्लेम करते हैं उस तरह नहीं है. हाँ एविडेंस आया नहीं, पर पर वो ये दिस इज डिस्कार्ड भी किया गया. आप देखिए 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 आंदोलन जी, दीज आर फाइनल कमेंट्स. दिस इज फाइनल नॉट. नहीं 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 नहीं, दीज आर फाइनल कमेंट्स. दीज आर माय फाइनल कमेंट्स एंड इट्स बेस्ड ऑन एविडेंस. मैं फिर बता रहा हूँ. क्या था आप ये बता रहे हो, क्या नो ये नहीं बता रहे हो क्या था. आप ये बता रहे हो कि मैं जो ये कह रहा हूँ दीज था. आर माय फाइनल कमेंट्स. हाँ, These are my final comments and I will Sir, make I'm them. going to be very, very not hold commenting. on a second, You're not guys. commenting. No, These you're are not my commenting. final Eight comments. second, I would let no one Nothing. interject. No, नहीं guys, नहीं can you be no. quiet आप for a आप second? I Can we नहीं, can. पर No. ये गलत कंफ्यूजन है, ये गलत इधर आप बताइए कि जजमेंट क्या था. ये ना कहिए कि मुझे पता नहीं जजमेंट क्या था, पर वो नहीं है जो मैं ये कह रहा हूँ आपको तो एक्ट का नहीं पता था 91 में आए आंदोलन जी. तो डोंट पुश मी टू डू दैट. ठीक है. लेट मी कंप्लीट एंड देन ठीक है. फाइनल कमेंट्स है. नहीं, फाइनल कमेंट में आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जजमेंट क्या. मैंने आपको नहीं कहा. I'm asking the audience to go and read the judgment. That's all what I'm asking. फुरकान भाई And आप that's a very एक्ट fair को point. कोट कर दो ना, यहाँ पे कोट कर दो, पैराफ्रेज कर आप दो यहाँ पे. एक सेकंड हाँ, रुक जाओ. आप यहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहे हो फुरकान भाई यहाँ पे. No, I'm not हाँ जी, gumrahing anyone. गुमराहिंग. I'm not gumrahing anyone. It is मैं exactly अपने फाइनल गुमराहिंग कमेंट्स दे रहा हूँ. when you are आप putting doubts in आपकी people's mind. जो करना हो कर लो. मैं अपना I would say whatever नहीं, I want एक to say second, and guys, it's based on everyone calm what down. I have Be read. quiet. ठीक है. I don't want to hear anyone's single word for a second. Please calm down. Okay, I'm going to be very fair.
30-second I'm going to give Andolan, 30-second I'm going to give East, and then Furkan Bhai is basically going to complete his final comments without addressing anyone's name or asking or saying that this was a claim made, but I don't agree. So that is a mistake. और यहाँ पे जो मर्जी करने के लिए हम नहीं बैठे हुए, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता. So 30-second first, East. नहीं नहीं शादी आप आंदोलन जी को दे चले आप फिर अब इस you've lost your opportunity. आंदोलन जी 30 seconds. जी, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने जो भी बताया है वो फैक्चुअल है. या तो कोई उसको कहे कि नहीं ये नहीं ये था. आप ये नहीं कह सकते हो कि कुछ और था, कुछ और था. राइट? आप बताओ क्या था. या तो आप बताओ क्या था. आप ये नहीं कह सकते हो कुछ और था और पूरे 1 घंटे की हम लोग डिस्कशन जो कर रहे थे वो बेसलेस हो गई. आप या तो हमें आज नहीं कल बता देना कि वो क्या था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि वो नहीं था जिसके डिस्कशन हुआ 1.5 घंटा. जी, thank you. अब I'll say my final comments. It's simple. जो एविडेंस जमा कराया गया था कोर्ट में, उसकी बेस पे डिसीजन नहीं हुआ, और इस बेस पे नहीं हुआ था कि इट वाज अ हिंदू साइट. ठीक है, जो डिसीजन जिस बेस पे हुआ था दैट वाज वेरी सिंपल, और वो ये था कि आप ऑलरेडी डिमोलिश साइट है, एंड टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन गुड इंटेंशन, दैट डिसीजन वाज मेड. It wasn't on the archaeological evidence. No, it wasn't like that. चलिए अब मैं पढ़ ही दे रहा हूं और उसका लिंक भी निकाल दे रहा हूं. आंदोलन जी, it's not a discussion. आपने करना होगा. फुरकान भाई फैक्चुअली गलत है ना, यहाँ पे कैटेगोरिकली फैक्चुअली गलत है. चैट में डाल दे रहा हूं. जी, रीड करें आंदोलन जी, आप कह रहे थे. चैट में डाल दिया, आप रीड कर लें. जी, मैं रीड भी कर देता हूं. मेरी बैटरी बिल्कुल 3% बची है. हाँ, द कोर्ट रूल द कोर्ट रूल द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मुझे चैट में नजर नहीं आ रहा. अच्छा, कमेंट्स में डालें चैट में. नहीं, मैं पहले डाल देता हूँ फिर पढ़ देता हूँ. पर मेरी बैटरी एक सेकंड और दीजिए, मैं जरा आंदोलन जी, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, आप विकिपीडिया का लिंक दे रहे हो. समरी दे रहा हूँ आपको जजमेंट की, और पूरे जजमेंट का तो मसला है. अब मुझे समझ आ गया मसला क्या है. ठीक है, होल्ड ऑन. मसला आपको समझ में नहीं आया. आपको मसला समझ में आया होता तो आप बताते ये नहीं ये है. क्योंकि आपको मसला पता नहीं है और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए आप बता रहे हो कि वो नहीं है. आपको अगर मसला पता होता तो आप बताते नहीं. आंदोलन जी, ये वाला पॉइंट नहीं. आप पढ़े और मुझे इसी से बताएं, आप किस पॉइंट पे आके, किस बुलेट पॉइंट पे, समरी ऑफ द वर्डिक्ट पे किस बुलेट पॉइंट पे, नंबर आप बताएं, मैं उस पे जाता हूँ. मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं जरा पावर बैंक लगा लूं. मेरी बैटरी बिल्कुल जाने वाली है. 2 जी जी. शाह जी वापस आ गए. Shaji, if you want to give your final statement, आप अपना final statement दे दें. Yeah, thank you very much. Sorry, I was disconnected. So my point is very, very simple, and I tried to conclude that last time as well. I'm going to be very quick. The thing is that as far as Babri Mosque in particular is concerned, um, Muslims don't have any revered connection to that. It's not one of the holy sites, which is like, nonetheless, what happened, in my opinion, and that is just my opinion,
in the way it was demolished was incorrect. It might have had some historical value, but that is lost. Moving forward, I think, like I said last time as well, there is a sentiment involved where Hindus, or at least a vast proportion of them, actually believe that it happens to be the birthplace of Ram, so it makes it more important for them. If we equate that in that kind of a situation, what I will have to basically conclude is that what's happened has happened, and just move on from that and make sure it doesn't happen in the future. On top of that, as far as the Hindu or Muslim uh, relations historically in those other religious places are concerned, they need to be well monitored. Otherwise, it will become a chaos both in Pakistan as well as India. They need to be protected as in what they are. And if there are some claims, they need to be negotiated in the court of law. On moving forward from there, I would also like to quote K. Andolan ji basically quoted something or made a claim. He might be of that opinion, but I hold a different opinion in regards to that. कि जब मैं उनको हजरत उमर की बात बता रहा था, वो कोई स्क्रिप्चर नहीं है, that's a historic fact. It's a thing which occurred. He was the second Caliph of Islam. He went there. He let the Jews in. Jews before that period of time were banned from entering Jerusalem under Christian rule. And that's when Jews were allowed back into what we call Israel today, or some people refer to it as Palestine. So that's the whole crux of this. We're going to continue this conversation in the coming weeks, or if not days, because I think we've just hit the doorstep of this. And thank you very much for joining us in those regards. I'll pass the microphone on to Medusa. Thanks for listening. Medusa, if I may, Acha, so if I may, Furkan bhai, एक are point. we waiting La, for? last Okay. point. Last point. I went through the whole document जो इसने भेजा है. There is not, क्योंकि ये That's fine. We're विकिपीडिया का going to पढ़ रहा है. discuss that later. They have a Yes. different opinion. Okay. It's a matter Okay. of religion. Not That's our fine. opinion. It's And okay. I Let's agree. So are we? Continue. One second. Are we waiting for Andolan or are we closing the session? He said he's bringing in the battery bank or something. I don't know. Power bank. So are we waiting for, because we're already over time? It's been I think then it's make about the final can statement. continue it. There's going to be another episode. We can pick it up from there इसके बारे since में दूसरा Mahmoud episode has go ठीक for the I close. guess. Yeah. हाँ ठीक है. So my final statement have a lot to do with Sid's statement. Sid ने चंगेज खान के बारे में कहा, तो I want to tell you guys a certain story, which is a fact, historical fact, but I want to tell it to you anyway. जब I think it was a Khawarizmi dynasty or something like that, something starting from I'm really bad at remembering names, but anyway, उसको चंगेज खान ने अपने डिप्लोमेट्स भेजे. तो उस बंदे ने, Khawarimis were Muslims, उस बंदे ने घमंड में आके चंगेज खान के डिप्लोमेट को मार दिया. ठीक है. तो चंगेज खान की जो वो थी, चंगेज खान जो थे, दे यूज्ड टू टेक दे डिप्लोमेट वेरी सीरियसली, कि अगर तुम्हारे पास कोई पीस के लिए आए या तुम्हारे लिए कोई ऐसा, तुम्हारे साथ कोई बंदा भेजा जाए तुम्हारे वो पार्टी से, वो अपोजिंग पार्टी भी हो, तो you have to take care of them. You have to make sure that they are safe, because they're a form of communication and connection and everything. Anyway, Genghis Khan invaded them. ठीक है. तो वो उनकी सब जो इंटेलेक्चुअल और जनरल्स थे, उन सबको लेकर आया मैदान में. ठीक है. मस्जिदों वस्जिदों को जला के, और उन्हें कहता है कि मैं चंगेज खान हूँ और मुझे अल्लाह ने भेजा है तुम लोग के अजाब की तरह. So a lot of Muslims consider Genghis Khan as an azab from God. You get it? Yeah, I guess that's all I wanted to say. Please subscribe to the channel. Thank you for listening to us. Press the bell button so that you get regular update. We'll be talking about discussion. We'll be talking about religion, history, uh, current affairs. We might have some fun sessions as well. Keep listening. And I guess we'll see you again, I guess tomorrow, maybe. Yeah. So see you. Bye-bye. Have a good day. Or have a good evening.